done for all these years. मजाक नहीं है दोस्तों, छोटी Thank you. Yeah, thank you. Thanks, Mayur. Are we ready? Shall we start? Chalo, visible, right? Shall we start, my dear friends? Wow, what a quotation, man. I just loved it. Stay away from what? Negative people. They have a problem for every solution. Some people I have seen where in exam, they solve a question, they get the correct answer, then they start thinking, how come I got correct answer? मुझे correct answer कैसे आ सकता है? ऐसे रहते थोड़े लोग. ठीक है. Anyways, very, very good morning, my dear friends. Dosto, good morning. Right, come on, let's begin. So friends, we are done with almost 4 lectures and today is our 5th lecture what we are talking about. In next 1-2 days, we'll complete our chapter 1, basic concepts. But it is not just basic, we discussed a lot in the basics. समझ में आ रहा है ना? कितना बात करें हम लोग basics में आपको ही पता है. और कितना बात करने वाले because basics are the roots of any topic. When you get perfect in that, then only things go better. Clear, my dear friends, everybody? All of us? Done, my dear friends. Yesterday we had done a discussion about section 115BB, 115BBE, and we spoke about something called TDS, and we solved some brilliant problems. I think whoever had some doubts about TDS 2 days back, they have got full clarity by yesterday's problems. Clear hai beta pakka sabko? Everybody? So what is section 27 beta? 29. 225A. Come on, define India. India covers territory, territorial waters, seabed, subsoil, underlying such water, continental shelf, and exclusive economic zone. Airspace about territory and territorial waters. Barabar hai? Bang on. 231. 234. Section 3. Section 4. Beautiful. The most important section of income tax. Section 4. Income earned by an during the. Are there any exceptions to this? I want name and section number. Okay, come on. Shipping business of non-resident. Section 172. Persons leaving India permanently or for long time. Section 174. Formed for short duration or purpose. 174A. Persons likely to transfer property to avoid tax. Section 175. Discontinued business. Section 176. Full clear, no? Exam में आएगा कभी कभी 2 मार्क के लिए. आया मतलब अपने लिए जैकपॉट है. ये सोचो. Good. 87A. Boss. Only for whom? Resident individual whose total income does not exceed 5 lakhs. How much is the rebate? Tax payable or 12,500, whichever is lower. There is a reason for giving that 12,500, whichever is lower. I'll prove you that. Don't worry. Clear, my dear friends? कुछ तो कमेंट है यहाँ. सर कल का लास्ट प्रॉब्लम आधा ही हुआ, वो पूरा हो गया दोस्तों. फ्रेंड से चेक कर लेना. लाइट चला गया था, टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बट वी सॉल्व द प्रॉब्लम. जस्ट चेक फ्रॉम योर फ्रेंड्स. ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? कल का क्वेश्चन पूरा हो गया ना? ठीक है, डन. व्हाट इज सेक्शन 288A? 288B, rounding off of tax. 115BB, tax rate, flat rate of 30%. 115BBE, unexplained incomes, unexplained investments, unexplained expenditure. Tax at what rate? Flat rate of 60%, plus surcharge 25%, plus cess 4%. Effective rate
effective 78 कैसा है समझ में आया ना बेटा? Done. Very good. So friends, unexplained. If you explain and don't explain properly, also gone. याद है ना बेटा? Very good. That is about 1.5 BBE. Friends, what is section 14? Chargeability. Yeah. Heads of income. How many heads of income are there? What are those 5? Salaries, income from all 5 heads of income combined together. What do we call it? Gross total income. Deductions under chapter 6A. Total income. On that we'll calculate tax. We'll also add HEC. Less TDS advance tax. Balance is net tax payable or refundable. Refund भी आ सकता है भाई. अरे बराबर है ना? बेटा clear है? Process पूरा समझ में आ गया? Excellent. One more last question to you. That is, when I say deduction in chapter 6, there are 2 types. Deduction based on payment made, deduction based on incomes earned. And in payments made, I taught you 2 points so far. ATC, इसमें बहुत कहानी बाकी है, but अभी तक 2 point हो गया इसमें. क्या है 2 point? Life insurance, tuition fees for 2 children for full-time education. मैं लिखाऊंगा बाद में. Student is telling अभी लिखा होना सर. पूरा पढ़ने के बाद लिखेंगे ना यार. ATC में 10-15 point है उसमें. अभी क्यों करना है एक साथ? बाद में करते. ठीक है ना? ट्यूशन फी फॉर 2 चिल्ड्रन फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया. और एक बात, लाइफ इंश्योरेंस. 80D बेटा. 80C का लिमिट क्या है? 1,50,000. ये 1,50,000 पूरा डिडक्शंस का लिमिट है क्या? 80C का लिमिट है. बराबर है? बोलो 80D का कितना लिमिट? 25,000. सीनियर है तो 50,000. दोस्तों, everybody clear with this? Good. Then what is 80GGB? Company to political party. कितना मिलेगा डिडक्शन? पूरा मतलब जो अदर देन कैश है उतना पूरा मिल जाएगा. GGC, अदर देन कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी. इफ शिवा तेजा किया तो कौन से सेक्शन में आएगा? इफ एक्सपर्ट इज डूइंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज डूइंग, Adani Industries are doing, I mean, other industries is doing. GGB. So, barabar hai na? Everybody. What is 80TTA? Interest on savings bank account. Dosto, for non-senior citizen. Kitna hai deduction? Interest or 10,000, whichever is lower. TTB bacho. Interest on savings bank account or interest on fixed deposit for senior citizen. कितना है deduction? Interest or 50,000, whichever is lower. बेटा clear है? पक्का समझ में आया यहाँ तक सबको? Sure, my dear friends. Everybody, are we clear? So can we proceed? चलो guys. So today we'll discuss some interesting special tax rates. Then we'll solve some more interesting problems in this particular first topic of basic concepts. Clear? And after that, we have some more concepts left out to talk. That also we'll discuss and then complete this topic. ठीक है ना? Mostly आज major काम खत्म हो जाएगा. थोड़ा बहुत बचेगा वो कल खत्म करते हैं हम लोग. ठीक है ना? But rates का context में आज close करते हैं हम. सुनो ध्यान से. सब लोग please, everybody focus, everybody concentrate. Something very important. Guys, what are the 5 heads of income we have got? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. और IFRS, whatever you call it. PGBP full form क्या है? Profits and gains from business or profession. IFRS, income from other sources. CG मतलब? Now, my dear friends, when I talk about this word, capital gains, whatever questions we solved so far, I always told the figure capital gains is 0,000 because का discussion हुआ नहीं अभी तक. But आज के बाद वो figure 0 नहीं रहेगा. 100% मैं कुछ ना कुछ फिगर दूंगा उसमें. ठीक है? बोलो, what is a capital gain first of all? Simple terms, capital gain is nothing but gain what we get from sale of a capital asset. For example, हमने कुछ बिल्डिंग बेच दिया, या तो शेयर्स बेच दिए, या तो कुछ ज्वेलरी बेच दिए, then we come under income from capital gains. बराबर है बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? Now listen. In this capital gains, my dear friends, there are 2 types. That is long term, short term. And under income tax law,
the tax rate for long term is different and the tax rate for short term is different. But before I proceed and explain to you long term and short term, first let us understand कि दोनों में फर्क क्या है. In some cases, they told if you hold the asset for more than 12 months, it is called long term. In some cases, they told if you hold the asset for more than 24 months, it is called long term. In some cases, they told if you hold for more than 36 months, it is long term. Which case, what months, we will talk in detail when I go to capital gain. Clear, my dear friends? But 1-2 examples I'll give you now. Example number 1. In case of listed shares, listed मतलब पता है ना? What does listed mean? Registered. Listed on a recognized stock exchange. Example for recognized stock exchange? NSE and BSE. What is NSE full form? BSE? Who is controlling this BSE NSE? What is SEBI full form? Expect किया कोई तो बोलेंगे ऐसा stock exchange. Securities Exchange Board of India. Stock is a small word. Securities is a wider word. It covers shares, debentures, bonds, everything is covered in that word securities. So this BSE NSE is regulated and controlled by whom, my dear friends? SEBI. Friends, speak out. So in case of listed securities, they told that if you hold for more than 12 months, then we call it as long term. Less than 12 months, we'll call it as short term. Simple example, Shiva Teja has purchased shares of Reliance Industries. Ambani, yeah. I purchased shares of Reliance Industries on 10th October 2021. When did I buy? 10th October 2021. And I sold on 6th August 2022. I repeat again, I purchased on 10th October 21 and I sold on 6th August 22. Long term or short term? If I sell it on 20th October 22, because I hold it for more than 12 months. समझ में आ रहा है बेटा? Which case what? We'll talk in detail separately in capital gains. But example, listed securities के लिए 12 महीने है. In the same way, for land and building, they told in the law 24 months. In case of what? Land and building. For example, I purchased one property, I sold within 1 year. It becomes short term. I sold after 1.5 years. 1 year, 11 months. 1 year, 11 months, 29 days. 1 year, 11 months, 33 days. Long term. 33 मतलब more than 2 years हो गए ना भाई. They're getting clarity. So when do we call it long term? When do we call it short term? We will talk in detail when I go to capital gains. But now my importance is for you to teach you about what, my dear friends? Tax rate for capital gains. Where, let me tell you the point, tax rate for long-term capital gains is different. Tax rate for short-term capital gains is different. Clear, my dear friends? I'll ask you one question. According to you, which one is good, long-term or short-term? Huh? क्यों? Gains ज़्यादा मिलेगा, ठीक है. This you will learn in your financial management. How will the risk market will react? What will happen in shares? What is your bull, bear? All this you will learn in financial management. Prashant sir will teach you when you go to group 2. But I'm not interested to teach that now. Now I'm interested to teach something interesting. That is, government point of view, tell me now, where do you think more tax will be there? Short term or long term? Huh? सोच के बोलना. गवर्नमेंट बोल रहा है भाई, I'll tax you more in case of short term. I'll tax you more in case of short term. वही बोले थे क्या? Unpardonable. I'll tax you more in case of short term. Fundamental reason being, income tax is telling, boss, आप एक चीज याद रख लो. Whether your wife will stay with you forever or not, we don't know. But income tax will stay with you forever. ठीक है? Wherever you go, our network will follow. That our income tax will follow. Whatever money you make, we are a partner with you. If you get lost, we are not there with you. You're getting what I'm saying? You are telling, I will do some illegal activity. Fantastic. Kar beta. Kar. Tax pay kar. याद है ना बेटा? Illegal income is also taxable. दोस्तों बताया था आपको चीज. Everybody clear, my dear friends? Now listen very, very clearly. Something extremely important. Listen carefully, my dear friends. What is that we are talking about? Capital gains. I divide into 2 parts. What is the 2 parts? Long term and
short. Now listen carefully. Long term general rate is 20% under section what beta? I'll write here only. 20% under section 112. So getting clarity? So long-term capital gains is taxable at the rate of which what percent, my dear friends? 20%. As per section? As per which section, my dear friends? 112. What is section 115 BB? Casual income. 115 BBE. Unexplained incomes, unexplained investments, unexplained expenditure. Investments not properly recorded. Amount borrowed or repaid on hundi otherwise than through account paid check. बराबर है, याद है ना? अकाउंट पे चेक, बेरर चेक. वेरी गुड. चलो, लॉन्ग टर्म क्या रेट ऑफ टैक्स है बेटा? 20%. दैट इज जनरल रेट. दोस्तों बराबर है? Everybody sir. But now I'll tell one special point. Listen very clearly. Extremely important. Special point here. LTCG. What is the line note? Long-term capital gain on sale of equity shares. On sale of what beta? Equity shares. Or units of EOMF. I repeat again. What is the line I wrote? Can you repeat again? Long-term capital gains on sale of what? Equity shares or units of what? Equity oriented mutual fund. दोस्तों बराबर है ना? So there is no proper place there. Let's write again once again please. Okay. What is that we are talking about, my dear friends? Capital gains. Come on. Divide into what parts? Long term, short term. And long term, we'll divide them into two parts again. Long term. Come on. General rate. At the rate of 20%. As per section 112. दोस्तों बराबर है ना? सबको दिख रहा है ना ये? Yeah, please cooperate. Come on. What is the second point I was just talking about, my dear friends? Long-term capital gains on sale of equity shares or units of EOMF or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid. चलो अभी पढ़ते समझते फिर बाकी लिखूंगा. अभी रेडी? चलो बेटा पढ़ो. लेफ्ट साइड वाला तो समझ में आ गया ना आपको? लेफ्ट साइड वाला क्या है? जनरल रेट क्या बेटा? 20%. विद सेक्शन 112. बराबर है? इधर तक क्लियर है? Come on, right side, what is the point we wrote? Long-term capital gain on sale of equity shares. Hold on. Do we know what is equity shares? Equity में preference में फर्क क्या है? Voting rights. अरे उससे पहले सबसे पहले एक पॉइंट बोलना है. Ownership. Equity shareholders are the owners. Preference are not the owners, but they have just got a preferential right. That means better than debentures. Better than debentures, but not as good as equity. बराबर है ना? Long-term capital gains on sale of equity shares or units of EOMF. EOMF stands for Equity Oriented Mutual Fund. Equity Oriented Mutual Fund. First of all, what is a mutual fund? Tell, you show your talent. Mutual fund are subject to read all documents carefully before investing. टीवी में देखे ना? दिल शो. What is a mutual fund? सुने बेटा म्यूचुअल फंड का नाम सुने ना? क्या है म्यूचुअल फंड? Collection of shares. Oh my God. It's not a share. Don't use the word share at all. Pool of money is collected then from individuals. Okay. Fine. You are saying something, no? Wonderful. Good. Sir, let me give a small example.
to clarify everybody who don't know what is mutual fund. Okay, listen. Imagine all of you guys are having money with you, but you really don't know where to invest. I've got skill set with me. I know where if I invest, money will come. Clear, my dear friends? I'm taking money from you. By taking money from you, am I doing business? मतलब मैं कुछ धंधा चला रहा हूं क्या कर रहा हूं उसको इन्वेस्ट करूंगा उधर अगर प्रॉफिट आया तो मैं आपको प्रॉफिट दूंगा उधर अगर लॉस आया तो मैं आपको क्या दूंगा दैट इज वेरी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क because I'm not doing business with that money. I'm only investing. That is why your fund is subject to what risk? Market risk. समझ में आया क्या बेटा? Profit आया तो profit दूंगा, loss आया तो loss दूंगा. मेरे हाथ में नहीं है वो, business नहीं है वो. So getting my point, everybody? And one more point. In case of mutual fund, we don't give you any. I mean, सब लोग पैसे दिए ना, मैं आपको share नहीं दूंगा. I'll give you only units. I'll give you units. The reason being very clearly because I cannot give you share because I'm not doing any business with your money. I'm only investing. When I'm investing, how can I give you share? I'll only give you what? Unit. So getting clarity? Repeat the line once again, come on. Long-term capital gains on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund. Now we understood what is mutual fund. Now let us understand what is equity-oriented mutual fund. Clear? Suno beta. What is an equity-oriented mutual fund? Basically, there are two possibilities. Possibility number one, this mutual fund is investing greater or equal to 65% in equity shares of डोमेस्टिक कंपनी. मतलब जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड के पास आया उसमें कितना सर मिनिमम 65% ग्रेटर और इक्वल टू minimum 65% they are putting in equity shares of domestic company. Then we call the fund as equity oriented mutual fund. You might ask next question to me, sir, what if they are putting less than 65%? Then we call that fund as debt oriented mutual fund. What mutual fund? Debt oriented mutual fund. समझ में आ रहा है बेटा everybody? दोस्तों बोलो यार, speak out. कब तक यही करते रहेंगे? 2729 हो गया, जमाना बदल गया यार, कुछ नया भी करना है अपने को. Please, let's keep progressing every day. Come on. We are talking about equity oriented mutual fund. Possibility number one, which is investing more than equal to मत बोलो बेटा, minimum बोलो बस कदम. Which is investing minimum 65% in equity shares of domestic company which are listed on RSC. What is RSC? Recognized stock exchange. समझ में आ रहा है बेटा? अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सुन लो ध्यान से. I took money from all of you. I'm a mutual fund. I'm investing. Okay? I took money from all of you. 80% I invested in equity shares. 20% I invested in debentures. What kind of fund I am? My fund is called equity oriented mutual fund. समझ में आ रहा है क्या? Next situation. I took money from all of you. I'm a mutual fund. 60% I invest out of money what I got. 60% I invested in equity shares of domestic company. And the balance 40% I put in debentures or preference shares, whatever it is. Now tell me what kind of fund I am. Debt oriented mutual fund. समझ में आ रहा है क्या? और ये सेक्शन बात कर रही है, एक कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं, दिस ओनली फॉर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड. क्लियर है क्या? अभी तक कहानी खत्म नहीं हुआ. We are still not done with what is equity oriented mutual fund. First possibility, which is investing minimum 65% in equity shares of domestic company. Second possibility, suno, this mutual fund is investing 90% or more in another mutual fund, and this another mutual fund is investing 90% or more in equity shares of domestic company. समझ में आ रहा है बेटा? Speak out, my dear friends. Madam, good morning.
Come on, wonderful. Concentrate, everybody. Focus. Listen, everybody. What is it I'm trying to talk about? We are trying to understand what exactly is the meaning of equity-oriented mutual fund. Mutual fund is something like a collective investment scheme. Mutual fund is something like collective investment scheme. Now, when do you call this mutual fund as equity-oriented mutual fund? Two possibilities. I am a fund, mutual fund. You all gave money to me. At least 65%, minimum 65%, I have put in equity shares. Then my fund is called equity-oriented mutual fund. First possibility. Second possibility, I am investing in another fund. मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे इन्वेस्ट करना. अरे समझ में आ रहा है? Practical possible, boss. There are some people who have got skill to raise money, but they don't know where to put. This fellow will invest in another fund. Now that fund is investing in equity shares. In that case, what they told is this fund should put minimum 90% in another fund, and that another fund should put minimum 90% in equity shares. Then the first fund is called equity oriented mutual fund. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Now local language I'll tell. There is a mutual fund A. Mutual fund A is investing in mutual fund B at least, and this mutual fund B should invest in equity shares at least. Then this A is called equity oriented mutual fund. Second possibility, second diagram bolo aap. There is one A, directly equity shares or domestic greater or equal to. Then also we call this A as equity oriented mutual fund. Clear है बेटा? सबको समझ में आ रहा है बेटा? Can I go back to where we were? Let's see. बाद में लिखते हैं हम लोग. Equity oriented क्या होता है बाद में लिखेंगे डिटेल में. ठीक है ना? Yes. Suppose that B invest in C. B invest in C. So Again 90%. yes, ultimately it has to go to equity shares. Finally money should come into equity shares. Then only we call it as equity oriented fund. You might ask one, sir क्या फर्क पड़ेगा अगर equity oriented है debt oriented है? Equity oriented का tax rate अलग है, debt oriented का tax rate अलग है. तो बहुत फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत. कितना? Exactly. Are we clear? Let's proceed. चलो, where we were? Oh my God, ये place चले गया. I want this place. Can I proceed? Come on. What is the second point we're trying to talk about? Long-term capital gains on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund or units of business trust. Explain करने दो यार. अरे कितना रुको यार. Units of क्या दोस्त कमा रहे? Equity shares or units of equity-oriented mutual fund or units of what? Business trust is as good as we want to invest in some business. Correct, no? But a business में सीधा पैसा डालने के लिए अपने पास उतना पैसा नहीं है. That's why practically there are trusts who create one kind of a pool. There are trusts who create some kind of a pool. They take money from public, then invest in that. इसका एक example दूंगा मैं, so that full clarity will come. Practically, there is one kind of trust known as real estate investment trust, which we call it as REIT, R-E-I-T, real estate investment trust. Let's take a small example. Let us say in Pune, one prime location, Koregaon Park, KP location, in some prime location, Shiva Teja wanted to buy a property. I saw one property. Property value is 10 crores. And I realized that if I put 10 crores and buy the property, I will get a monthly rent of 10 lakhs. मतलब 1% return आएगा. Yes. 10% return. 1%. अरे यार बोलो ना यार. अरे 10 करोड़ पे 10 लाख रेंट आ रहा मतलब कितना रिटर्न आया भाई? अरे बोलो ना बेटा. 1% बराबर है. बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉपर्टी बहुत अच्छा लगा है. 10 करोड़ है, 1% रिटर्न आ रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है प्रॉपर्टीज में. आप इधर ध्यान दो. ठीक है ना? 10 crores if I put it, 1% return is coming. I am extremely happy for that. But I have got only 2 crores with me. सिर्फ 2 करोड़ है और प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं है. क्या करूं भाई? लोन्स बैंक वाला नहीं दे रहे लोन, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन ज्यादा है. Then what I can do is I can take approval from SEBI. Sir, I'm giving a small local example for you. ठीक है? I can take approval from SEBI and I can create one trust, real estate investment trust. ठीक है?
And I can tell the people that, boss, whoever wants to buy real estate assets, you put money here, 1% return will come. This is the property what you are buying. आपके पास 50 लाख है, फिर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते. 50 लाख से उतना बड़ा प्रॉपर्टी मिलता था क्या आपको? बोलो भाई, फिर भी ये प्रॉपर्टी में शेयर मिल रहा है ना? अच्छी बात है ना यार? So you are getting some unit of a business trust. Trust will invest in property. Then rent will come to trust. Trust will divide between members. समझ में आ रहा है क्या? Members will give money to the trust. Trust will put in the property. From property, rent is coming to the trust. Then trust will distribute it to members. समझ में आ रहा है क्या? Big real estate companies like DLF. सुने नाम DLF? Delhi Land Finance. And top-notch developers in India. Saral Puria Satwa. Big developers are there in India who does so many prestige properties. Prestige नाम तो नहीं सुने क्या? ठीक है. Legend Builders. ठीक है, वो भी नहीं सुने. रोहन बिल्डर्स, पुणे का लोकल बोल रहे हैं आप. ठीक है. लोधा बिल्डर्स, ठीक है, जो भी है, बड़े बड़े बिल्डर लोग हैं बेटा, जो लोगों के पास पैसा उठाने के लिए यही काम करते हैं वो लोग. एंड दे क्रिएट वन ट्रस्ट कॉल्ड बिजनेस ट्रस्ट. एंड दिस रिकॉर्ड अप्रूव फ्रॉम सेबी. सुजल समझ में आए ना? अगर तेरे को लग रहा है सर मुझे भी एक प्रॉपर्टी लेने का मन कर रहा है, मैं भी एक ट्रस्ट बना के सभी के पास जाऊं क्या? नहीं देते ऐसे, इतना आसान नहीं है सेबी का अप्रूवल. वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट बॉडी इन इंडिया इज सेबी. गेटिंग क्लैरिटी? दोस्तों बोलो, अभी पढ़ो भाई, क्या लैंग्वेज लिखी हम. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ business trust through recognized stock exchange on which, what is STT? Shiva Teja? Shiva Teja tax. बोलो भाई STT क्या है? अरे शिवा तेजा, STT stands for Securities Transaction Tax. Securities, whenever we are buying and selling shares on the stock exchange or securities on the stock exchange, we are required to pay STT. Should is asking, pay नहीं करे तो? पे नहीं करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता आपके पास. क्यों बोलूं? when you do a transaction, when settlement happens, they will deduct STT and give you balance. तो पे नहीं करने का ऑप्शन किधर है आपके पास? समझ में आ रहा है क्या बेटा? स्टॉक एक्सचेंज पे आपने शेयर खरीद लिया, मैंने आपको बेच दिया शेयर, मैं जब बेच के पैसे मेरे पास आएगा ना अकाउंट में, STT कट के ही पैसे आते हैं यार. तो STT पे नहीं करने का कोई स्कोप ही नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज STT फुल फॉर्म? Securities Transaction Tax. Are we clear, everybody? Speak out. Yes, come on, read that line totally. Long-term capital gains on sale of equity-oriented mutual fund of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid. One more time. ओके, होल्ड ऑन, सॉरी टू इंटरप्ट. लेफ्ट साइड क्या लिखे थे हम लोग पहले? जनरल रेट. तो उसमें क्या आएगा फिर? 20% आएगा, वो तो बराबर है बेटा, पर उसमें क्या आ सकता है? किधर लिखे हम? हाँ. एंड राइट साइड वी रोट स्टोरी ऑफ इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक इन STT इज पेड. तो लेफ्ट साइड में क्या आ सकता है? डिवेंचर्स और unlisted shares. Wonderful. Next, debt oriented mutual fund. Very good. Debentures, real estate. Exactly. उधर बोलो यार, क्यों शेयर्स के पीछे घूम रहे? शेयर्स में मतलब उसी में बैठे बस. Buying and selling of land. There is a long term capital on sale of land. ये वो वाला पॉइंट आएगा क्या? फर्स्ट वाला जनरल रेट ही आएगा ना? बेटा बोलो, जनरल रेट क्या है बेटा? 20%. सेकंड पॉइंट, long-term capital gains on sale of or units of equity-oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid. What is the tax rate? I didn't tell. I will tell. Hold on, पहले clarity तो आने दो. Friends, clear? Everybody, sir? What is section 225A? 231? 234? अभी बोलो सेकंड पॉइंट क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट
through recognized stock exchange on which STT is paid. On which what is paid? Is taxable at the rate of 10%. At what rate, beta? On amount exceeding 1 lakh. On amount exceeding what, beta? On amount exceeding 1 lakh. Friends, I hope you are understanding, my dear friends. What is the tax rate, beta? Bolo? 10%. On what? Amount exceeding 1 lakh. इसका मतलब क्या है? If I get a long term capital gain of 1,40,000, I will pay tax only on 40,000. At what rate? 10%. I'll take 1 minute of your time to give you some knowledge beyond exam. That is, listen. Prior to 2018, yes, my dear friend, listen. Prior to 2018, there was no concept of this section. Earlier, before 2018, long-term capital gains on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid was exempt. Was exempt once upon a time up to 2018. In 2018, from 1st of April 2018, they made this as taxable. Because a lot of people, what they were doing is, whatever money they have, put in the shares, hold for 12 months, then sell it. Whatever gain comes, no tax, enjoy. And ultimately, we all know how much we love tax planning. We are ready to give divorce also, marry also again. That level, we are there. So tax planning अपने लिए बहुत प्यारा है. बेटा बराबर है? समझ में आ रहा है बेटा? And in 2018, government brought amendment telling that we want to start taxing this, and they made this taxable. Friends, speak out. Everybody, sir. Shares, boss, shares. कुछ भी हो सकता है. It's all a gamble. Not betting, gambling, but कुछ भी हो सकता है. Some of them invest blindly. Some of them do a market research. Some of them do a technical analysis, check their financial statements, how they are performing, what they are doing, and then buy. अरे आपको ये MRF का कहानी पता है क्या? एक बंदे को MRF का शेयर्स मिला दादाजी का. पता है क्या? अरे यार कैसा नहीं पता यार आपको. ठीक है मैं बोलता हूँ 2 मिनट. ठीक है सुन लो यार. अरे बहुत मजा आता है यार. उस दिन मेरे घर पे जो सीन हुआ वो भी मस्त इंटरेस्टिंग है. बताऊंगा सुन लो. What has happened is there one person grandfather was there, son was not there, but grandson was there. Grandfather was in coma. He has had a health issue. Okay, he was in coma, but he was in coma for a lot of years. One fine day he came out of coma. Then he told his grandson, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, बट बहुत साल पहले मैंने कुछ शेयर्स परचेस करके रखा है जो कबोर्ड पे है, घर पे जाके देख लेना. उसके बाद 2 दिन में आदमी गुजर गया. Grandfather, correct? No, this gentleman went home after that, opened the cupboard, he saw the shares of MRF, which was a value of 200 crores, which his grandfather purchased in 1990. After 20 years, in 2015 or somewhere, 16 somewhere, he called CNN IBN. CNN channel पता है ना? CNN channel he called and told, मेरे दादाजी का MRF shares मिला ये ऐसा है. When they calculated the shares, they were shocked. 3,000 रुपए का एक शेयर है, and he had got shares which was worth about 200 crores. और ये बंदा था कुछ ऑटो ड्राइवर का काम. जिंदगी पलट गई ना यार एक साथ. 200 करोड़ मिला यार. 200 करोड़ लिटरली एक साथ. कोई सुने नहीं ये कहानी? सुना है ना? और क्या मतलब क्या हो गया यार? कहां से कहां पहुंच गया ये सीधा 200 करोड़. You getting what I'm saying? Is it long term or short term? Long term ही है. बट बेटा बेचा नहीं अभी तक. बेचेगा तो क्या होगा बाद में बताऊंगा आपको. When I go to capital gains. टैक्स तो समझ में आ रहा ना यार? बोलो ना यार. In fact, that day when that news scrolling was going on in TV, me and my father were having dinner. हम लोग we were having रोटी एंड सब्जी फल के खा रहे थे ऐसे ही. तो मैं वो देखते मैं पापा से पूछा, पापा दादाजी कुछ दिए क्या? कपबोर्ड में कुछ है तो बोलो देखते. Then my father called my mother, telling, अरे सुनो. Then I thought something is going to say, शिवा के लिए एक और फल के लेके आ जाना. अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ क्या बोल रहा है यार. ठीक है. Anyways, clear no? This jokes apart. Come on, getting clarity on this part, everybody. Can you all repeat one last time? Come on. Long-term capital gains on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund through recognized stock exchange
on which STT is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding. This concept is given by section 112A. What is section 112? General rate for long-term capital gains. कितना है? 112A. Long-term capital gains on sale of equity shares, units of equity or mutual fund, units of business trust to recognize stock exchange of STT is taxable at the rate of on amount exceeding. समझ में आ रहा है बेटा? दोस्तों बहुत clear cut concept है. I wanted to teach this yesterday only actually, but yesterday we were busy in understanding the problems on TDS. That's why I controlled myself. But today we'll close. Are we ready? Everyone? That's it. That is the story of long term. But somebody is waiting, boss. Yeah. बहुत लिमिट से मेंबर्स का लिमिट है, अमाउंट का लिमिट है, वैल्यूज का लिमिट है. देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड. देन ओनली सेबी गिव्स अप्रूवल. अगर वो लिमिट नहीं है तो हम बोलेंगे, हम 3-4 लोग मिलकर बोलेंगे, हम भी बनाएंगे, हम भी बना लेंगे. ऑब्वियसली नहीं तो हो ही नहीं सकता वो. एग्जैक्टली. सर क्लियर? कैन आई प्रोसीड? दोस्तों बोलो ना यार. ठीक है ना? लिखते आराम से. जब हम लिखते हैं हम लोग, when we'll write definition of equity oriented fund also, everything we'll write. Okay? But first let's complete the story of what? What term? Short term. Brilliant. Students are excited. Chalo. Yes. Black color use करते हैं. Short term capital gains on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of. क्या बात है? स्टूडेंट बोल रहे सर सेम है क्या? थ्रू RSE चलेगा ना? Recognized on which STDs is taxable at the rate of 15%. Which percent? ये कितना था बेटा? On amount exceeding but 1 lakh. But here it is 15% on amount exceeding 50,000. Wonderful. On amount exceeding 0. समझ में आ रहा है क्या? और अमाउंट एक्सीडिंग 0, मतलब 1 रुपए है भैया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स पे कर. व्हाट परसेंट? 15%. कितने महीने पुराना खरीदा तू शेयर्स? 2 महीने हो गए साहब. तो इतना जल्दी पैसे कमाए ना? मैं तेरे साथ हूं ना भाई, तू पार्टनर हो यार तेरा. हाँ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली. एग्जैक्टली. लॉस कम्स, विल अलाउ यू टू सेट ऑफ द लॉस. डोंट वरी, बट आई विल नॉट शेयर द लॉस विद यू. Sir, clear? Speak out. Everybody, sir. Wonderful. Yesterday, some student came to me in the break, lunch break time, and asked me, "Sir, ये income tax इतना crazy क्यों है?" मुझसे पूछा crazy का मतलब क्या है बेटा? बोल रहे मतलब थोड़ा सा अलग है सर, मतलब डिस्कस करने में थोड़ा सा अलग है, मजा आ रहा है बट थोड़ा सा अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा है. बोला अच्छा है ना बेटा, अलग है. अगर सीधा होता तो प्रैक्टिकली लोग खुद ही कर लेते ना. इतना अलग है इसलिए तो अपनी वैल्यू है इतना टैक्स का. करेक्ट है ना यार? अगर इतना आसान होता तो सीए के पास आता ही नहीं ना बेटा. सर आजकल लोग ना P&L बनाने के लिए, ट्रायल बैलेंस डालने के लिए सीए के पास आना बंद कर दिए. इतना तो स्मार्ट बन गए लोग कि ट्रायल बैलेंस P&L खुद बना लेते और इतना सॉफ्टवेयर्स भी आ गए. करेक्ट ना? बट टैक्स के मामले में वो काम नहीं करते. बिकॉज टैक्स मामले भैया कुछ भी गड़बड़ किया, इंटरेस्ट पेनाल्टी पे कर. करेक्ट ना? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अकाउंटिंग इज मोर ऑफ ए कंप्लायंस. टैक्स में कुछ गड़बड़ गया भैया पैसे गए, उस पर मजाक नहीं करते. सीए के पास आना ही आना है. सर क्लियर नो? कोई डाउट नहीं है. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर सर वन ऑफ माय क्लाइंट, आई हैव डन हिज अकाउंटिंग ऑफ P&L, बैलेंस शीट, ट्रायल सब बना के दिया. आई टोल्ड हिम फीस 40,000. दैट फेलो टोल्ड सर 40 क्यों सर, 30 ले लो साहब, इतना ज्यादा थोड़ी लेते हैं आप, 30 में खत्म करो. पिछले साल तो 30 में के, इस साल 10,000 थोड़ी बढ़ाएंगे एक साथ. मैंने बोला सर ऐसा थोड़ी होता है सर, हर साल का इन्फ्लेशन है अपना अपना, फीस तो बढ़ता है, 40,000 दे दो. ही टोल्ड नो साहब 30,000 ले लो आप. चेक लिख के दे दिया वो और चले गया. मैं सोचा भाई अपना टाइम. Exactly after 2 months, this fellow got some income tax notice of some scrutiny.
एक स्क्रूटनी मतलब असेसमेंट का नोटिस आया उसको, नोटिस आया, जनरली वो काम के लिए मैं 25,000 फीस लेता हूँ, फॉर स्क्रूटनी वर्क आई टेक 25,000 फीस, बट आई टोल्ड दिस फॉर 50,000 फीस, 10,000 का ईगो हट हुआ ना उधर, तो वो इंटरेस्ट के साथ रिकवर करेंगे ना 25,000, उसको बोला मैं 50,000 फीस, वो बोला साहब तो कुछ कम करो ना, सर कुछ भी कम नहीं होता, आपको किसी और से कराना है तो करा लो सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, टैक्स का काम 50,000 फीस लूंगा, आपको ज्यादा बात करना तो बात करो, मैं 60,000 करूंगा फीस। वो बोला नहीं नहीं साहब ले लो कोई बात नहीं, उसकी फट गई बस, पहले तो फटी नहीं थी, क्यों? अकाउंट्स का है, कोई पूछ नहीं रहा ना उससे, इधर टैक्स का मामला है, कुछ गड़बड़ हो गया तो पेनाल्टी तो लगेगी ना यार, ऑब्वियसली फ्रेंड्स। तो मोर प्रॉब्लम्स इन लाइफ फॉर बिजनेस पीपल, मोर बिजनेस फॉर अस। अरे बराबर है ना यार, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट्स इन टैक्स बॉस। सर गलत मत समझो, डोंट टेक दिस रॉन्ग, आई मीन लेट मी पुट इट लाइक दिस, सर डॉक्टर मेक्स मनी ओनली व्हेन पेशेंट इज नॉट फीलिंग वेल, and as chartered accountants we make more money only when our client is doing well। सर मैं सच्ची बोल रहा हूं आपको, मेरा क्लाइंट अगर मुझे फोन करके बोला है सर मैं नया धंधा चालू कर रहा हूं, मैं एक प्रॉपर्टी लिया 20 करोड़ का, मैं बोलता हूं सर कितना अच्छी बात है सर, मैं तो उल्टा ज्यादा खुश होता है यार, क्यों बोलूं, काम बढ़ेगा ना मेरा, काम बढ़ेगा ना यार, तू जितना अच्छा करेगा उतना अच्छा मेरे लिए, उतना अच्छा है मेरे लिए, वी सी प्रॉस्पेरिटी मैन, बिकॉज इन दैट प्रॉस्पेरिटी आवर प्रॉस्पेरिटी इज देयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना उसका धंधा बढ़ेगा उतना अपना काम बढ़ेगा, फीस बढ़ेगा, बराबर है ना बेटा। चलो गेट बैक, सो व्हाट इज सेक्शन 112, चलो बोलो भाई, सेक्शन नंबर के हिसाब से बोलेंगे अपन। 115 बीबी कैश एंड इनकम्स, बीबीई 112 general rate for LTCG, what is the general rate? 20%. What is section 112A? On sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund on which STD is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. What is section 111A? सेक्शन नंबर लिखे नहीं क्या हम लोग इधर? समझ में आया क्या? दिस 112A, 111A. 111A is for short term. What rate? 15%. 112A, long term, 10%. Amount exceeding 1 lakh. And if you observe carefully, language of 111A, 112A, both are same. But that is long term, this is short term. Sir, clear hai? Everybody, friends? Wonderful. Last point, then I'll close this. Sir, clear है ना? STT पे टैक्स लगता, जितना गेन मिला उस पे लगेगा टैक्स, जितना गेन मिला उस पे टैक्स लगेगा, वापस बोल रहा हूं, जितना गेन मिला उस पे टैक्स लगेगा। अब गेन का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, बस, उसका कोई लेना देना नहीं है। कंपटीशन कैसा करेंगे बताऊंगा मैं आपको, जब कैपिटल गेन में जाएंगे तब बताऊंगा, बट अभी वापस बोल रहा हूं, जितना गेन है उस पर टैक्स लगेगा, बस। सर क्लियर है? So that is why I shifted, changed this app. In this application, I didn't have an option to move left and right. समझ गए ना? Some of them इतना लिखने के बाद फिर क्यों चेंज करे? तू इतना फील क्यों हो रहा है भाई? सर क्लियर है ना? What is section 112? General rate for long-term capital gain. What rate? 20%. 112A. On sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STD is paid will tax at the rate of 10% on amount exceeding same case short term covered under section 111A, tax at the rate of 15% on amount exceeding, समझ रहे लॉजिक? Any other short term capital gains. Example, sale of land, jewelry, unlisted shares. अरे यार बोलना यार, any debt oriented mutual fund, any other short term capital gains, they told normal rates. In simple terms, slab rates. Somebody asking, so slab rate क्या है? अरे मेरे भाई
याद है ना? नॉर्मल, सीनियर, सुपर सीनियर, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अच्छा नेक्स्ट वाला, ओके बोलना भाई। एसी बेस है तो कैपिटल गेन है क्या, है ना? बट उसका कंपटीशन क्या है, अलग कंपटीशन है जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। कैपिटल गेन तो है, बट उसका कंपटीशन कैसा आएगा बताऊंगा बाद में। कैपिटल गेन तो है, ये तो पक्का है। आपका डाउट तो इतना ही है ना, कैपिटल गेन आएगा नहीं आएगा? आएगा, बट थोड़े एसेट्स नहीं आएंगे। जैसे अभी बता दो क्या यार, ठीक है, विल गो इन डिटेल व्हेन आई गो टू कैपिटल गेन चैप्टर, बट सम एसेट्स विल नॉट कम। फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, पिछले लास्ट 1 साल से ये यूज कर रहा हूं मैं, करेक्ट नो? इमेजिन आई एम नॉट शिवा तेजा बट आई एम सलमान खान, okay, and I conducted auction and I sold this for 1 lakh. When I purchased for 10,000 and I sold for 1 lakh. कितना प्रॉफिट मिला? But law students don't pay tax because it is not a capital asset. समझ में आ रहा है क्या? Speak out. इसलिए I told I am not Shiva Teja, I am Salman Khan. If not, who will buy for 1 lakh? समय का मतलब रहते थोड़े पागल लोग, कुछ नहीं कर सकते। नहीं टैक्स नहीं लगेगा ना, वही तो बोल रहा हूं ना। टैक्स नहीं आएगा ना बेटा, सलमान को भी टैक्स नहीं लगेगा, वही तो बोल रहा हूं मैं आपको। अरे आप समझे क्या मैं क्या बोला? इवन फॉर सलमान खान देयर इज नो टैक्स बॉस व्हेन ही सेल हिज व्हाट यू कॉल स्पेक्टेकल्स, बिकॉज इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट फॉर एनीवन। मेरे लिए नहीं, उसके लिए भी नहीं है। सब बराबर है ना? समझ में आ रहा है ना बेटा? बोलो बेटा। दोस्त तो बाइक चलाते है क्या? फर्स्ट बाइक क्या है तेरा लाइफ का? फर्स्ट बाइक कौन सा है तेरा? अच्छा, पापा ने दिलाए। स्कूटी या बाइक, अरे कोई भी हो यार, मोपेड, टू व्हीलर है ना तेरे पास? ये तेरा पहला गाड़ी है या पहले कुछ और था? साइकिल था। वंडरफुल, गुड क्वेश्चन। अरे अच्छा पॉइंट है। साइकिल क्या किया हो साइकिल का? क्या क्या? अच्छा घर पे पड़ा है। अच्छा मेरे भाई, उसको तू अगर बेच भी दिया ना तो टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट्स। सो इन कैपिटल एसेट्स सम आर नॉट कवर्ड। व्हाट इज नॉट कवर्ड विल टॉक इन डिटेल व्हेन आई गो टू कैपिटल गेन्स चैप्टर। ठीक है ना? जो पढ़ा है वो तो एंटिक बन जाएगा यार थोड़े दिन बाद। ठीक है, बराबर है ना? साइकिल तो अभी अरे नहीं आएगा भाई, टैक्स ही नहीं लगेगा। अरे अदर सोर्स में मतलब तू टैक्स करने के चक्कर में है क्या हर चीज को? नहीं, if something is not taxable, it's not taxable. Don't tell me bring under other sources. If something is taxable but not covered in 4 heads of income, bring under other sources. If something is not taxable only, other source में लाएंगे क्या? मैं आपको ये पूछूंगा, एग्रीकल्चर इनकम पीजीबी पे नहीं आएगा, अदर सोर्स में लाएंगे क्या? अरे वो टैक्सेबल है ही नहीं ना यार। जो टैक्सेबल है, जो फर्स्ट 4 हेड्स ऑफ इनकम में नहीं आ रहा है, अदर सोर्स में लेके आओ। जो टैक्सेबल है ही नहीं तो क्यों लेके आएंगे? फर्क समझ में आया ना दोस्त? गुड, व्हाट इज योर डाउट? सेकेंड हैंड और यूज्ड आइटम्स जैसे जैसे बोलो, वही बोल रहा हूं। सम पर्सनल इफेक्ट्स विच आर पर्सनल इन नेचर, आई डिडंट वांट टू टेल दिस वर्ड बिकॉज आई थॉट टाइम विल कम, बट सिंस यू आस्क्ड आई विल टेल. Personal effects are not regarded as capital assets. Personal effect means something which you are closely related to you, which is required for your daily wear. That is your spectacles, shirts, clothes, shoes, watch. They are all called personal effects. But if the watch is a gold watch, then it is not a personal effect. If it has got diamonds, then it is not a personal effect. So there is a big definition for it, which we need to learn very much in detail. That will take some sweet time. समझ में आ रहा है ना? आपका स्पेसिफिक कुछ पॉइंट है तो पूछ लो आप, मतलब जैसा, मतलब आपको कुछ पूछना है सेकंड हैंड किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे उसको तो पीजीबी पे आ जाएगा ना यार उसको। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर शिवा तेजा ने गोल्ड चेन भेजा है, मुझे कैपिटल गेन में आएगा। ज्वेलरी शॉप और रैंक का ज्वेलर्स वाला गोल्ड चेन भेजा है, उसके लिए तो पीजीबी में जाएगा ना भाई। नेचर ऑफ द आइटम विल, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट विल चेंज बेस्ड ऑन हु इज द पर्सन। करेक्ट नो? वंडरफुल। इधर से कुछ आवाज आया, वही डाउट, यही आंसर है। अरे यार दोस्तों क्लियर है क्या? somebody is asking सर लास्ट वाले का आप सेक्शन नंबर लिखे नहीं। अरे यार जब नॉर्मल रेट स्लैब रेट की बात आते हैं, दैट इज गिवन बाय फाइनेंस एक्ट। आपको जब 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख जब लिखा था, सेक्शन नंबर कुछ लिखे थे क्या? बिकॉज दो स्लैब रेट्स आर गिवन बाय फाइनेंस एक्ट।
So you have to understand that in income tax law, some rates are given by Finance Act, some rates are given by Income Tax Act only. जैसे 115 BB, 115 B, BE, 112, 112A, 111A, all these rates are given in Income Tax Act only. For that you will find section number. And they are called special rates. Like 115 BB, 30%, BB, 60%, 112, 20%, 112A, 10%, 111A, 15%. वाओ, समझ में आया क्या? बोलना मेरे भाई. एवरीबॉडी, कैन आई प्रोसीड? बोलो सर मुझे अभी 115 BB का टैक्स रेट क्या है? फ्लैट रेट ऑफ 30%. BBE का टैक्स रेट क्या है? 60%. सरचार्ज 25%. वंडरफुल. 112 का रेट क्या है? 20%. 112A on amount exceeding 1 lakh. 111A 15%. बराबर है ना? फ्रेंड्स स्पीक आउट. क्लियर? पक्का? सबको समझ में आ रही है बात? एवरीबॉडी फ्रेंड्स, सेक्शन 112A क्या होता है? थोड़ा अच्छा रिदम में बोलो. Long term capital gains on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STD is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. Clear? I feel so pathetic when students so loosely tell 112A equity shares पे 10%. ये क्या आंसर है भाई? कितना नमूना आंसर है ये? अरे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, इतना सिंप्लीफाई करके इतना इक्विटी शेयर 10% मतलब क्या हो गया यार? मतलब सुना मैंने ऐसे लोगों से. ठीक है ना? आपको तो क्लैरिटी आ गया ना? अगर आपको ऐसा कोई बोलता है इक्विटी शेयर 10%, उसको सीधा 4th फ्लोर पे लेके आ जाओ. वो विंडो खुलेगा, ओपन कर दो, फेंक दो उठा के. बाद में जो होगा देखा जाएगा. अरे ये कुछ तो करने का इरादा पे ऐसे ही बोला मेरे को देख के. हाँ, आप बोले ना 1-2-3 लोगों को फेंकना है सर. I was just joking, don't throw them. ठीक है. What is 112A? Last time one please. Long term capital gains on sale of equity shares. Some friends are there in the class. Come on, when I told, come on, start. Long-term capital gain on sale, ऐसा बोले. Then I was just drinking water. They kept silent. After I finished drinking, I saw them. 1 lakh. बस स्टार्टिंग बोल दिया, लास्ट में बोल दिए. Long-term capital gain on sale of 1 lakh. क्या है यार? Come on, last time please. Long-term capital gain on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STD is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. दोस्तों क्लियर है? सेक्शन नंबर्स पूरा क्लियर है? Let me tell you honestly, 90% of sections of first chapter are done. मतलब कल आप बहुत कम sections पढ़ने वाले, but थोड़ा concepts बाकी रहेंगे. Clear है ना बेटा? Everybody? And if I have to list down the sections, let me honestly tell you, अभी तक एक 20-25 सेक्शन हो चुके हैं. एंड ऑफ द क्लास 30 सेक्शंस हो गए क्या? 33. ओह, ये नोट कर रहा है. गुड सर. अभी एक्चुअली बोलने वाला था फर्स्ट चैप्टर के बाद, बट ठीक है, आप ऑलरेडी उस काम कर रहे हो तो अच्छी बात है. माय सजेशन टू ऑलवेज इज दैट ऑलवेज मेंटेन अ स्मॉल सेपरेट बुक और एट द एंड ऑफ दिस बुक ओनली लीव 4-5 पेजेस. एक पेज मत छोड़ो. एक पेज में हमारा काम खत्म नहीं होगा. पता है अपने को कैसे चल रहा है क्लास. तो एक छोटा बुक सेपरेट मेंटेन करो, या तो 4-5 पेज छोड़ दो इस पे. प्लीज कंटिन्यू. लिखो उस पे सेक्शन नंबर, उसके बाजू में टाइटल, सो दैट याद हो जाएगा. रिवीजन के लिए प्रैक्टिस होगा बाद में. सर क्लियर है ना यार? काम करो वो, मतलब जब भी टाइम मिलता करो. डन. एंड लास्ट में मैं चेक करूंगा. लास्ट मतलब आफ्टर 5-7-8 चैप्टर्स आई विल चेक. ठीक है? सो दैट इज योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट. करेक्ट? नो समबडी नीड नॉट बी एट द बैक ऑफ यू टेलिंग करो करो करो. यार फाउंडेशन स्टेज से आगे ऊपर, तो अभी आपकी जिम्मेदारी करने के लिए. ठीक है ना?
लिखते हैं बेटा. I want to take this chart. You can turn your book into landscape. और आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, मर्जी आपका. But I want this chart in book first. Then I will give some points. You can turn your book into landscape, or you want to write like that, write like that. Choice is yours. But properly लिखो. Yes, beta. I think after this we can solve one question which has got capital gains also. और बेटा एक बात ना छोटी बात सुनो ना यार, एक सेकंड सुनो प्लीज. सुनो ना बेटा एक बार. सर जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया कल तक, वट एवर टोटल इनकम वी गेट, वी बाइफरकेटेड लॉटरी एंड टुक 30%. नो, अभी मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा ना उसमें क्या करो आप लोग, लॉटरी में बाइफरकेट करो, उसमें 30% निकालो. आई मीन लॉटरी इनकम 30% निकालो, एलटीसीडी सेपरेट करो 20% निकालो, बैलेंस पे निकालो स्लैब रेट्स. समझ में आ रहा है मतलब क्या बोला? I'll repeat once again what I told. Listen very clearly, my dear friends. सब लिखने पे ही है. सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी सुनेंगे. So what I was telling you very clearly is that till yesterday, whatever problems we solved, when we got total income, first we separated lottery. I mean 115 BB and took 30%. Balance पे क्या करें हम? Slab rates. आज मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल में मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल में मिलेगा. एसटीटी पेड वाला है, अज्यूम करो. तो क्या करेंगे आप लोग? ग्रॉस टोटल इनकम में से लॉटरी हटाएंगे, 30% लेंगे. एलटीसीजी बाइफरकेट करेंगे, 20% लेंगे. एसटीसीजी बाइफरकेट करेंगे, 50% लेंगे. बाकी जो बच गया स्लैब रेट्स. बराबर है? करते हैं क्वेश्चन ऐसे. पहले ये लिख दो, फिर अपन करते हैं. टीडीएस डिपेंड करेगा, मतलब टीडीएस तो लास्ट में निकालेंगे हम कैसे भी. हाँ, पर कैपिटल में जरूरी नहीं कि हर ट्रांजैक्शन में टीडीएस हो. आपको एक अलग चैप्टर है दोस्त, टीडीएस करके एक चैप्टर है जो एग्जाम में 4 से 6 मार्क आता है. कौन से ट्रांजैक्शन में टीडीएस लगता है. जरूरी नहीं कि हर ट्रांजैक्शन में टीडीएस लगे ना. आप जब फीस एक्सपर्ट को पे करें, आपने कुछ टीडीएस करके दिए क्या? नहीं ना. तो नॉट एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज टीडीएस. किस केसेस में हम लोग बात करते हैं डिटेल में. डन. तेजस भाई समझ में आ रहा है ना? ठीक है. ये 7वें क्लियर. आई विल मेक यू राइट. अब एसटीडी लिखो, अभी मैं नोट में लिखाऊंगा पूरे पॉइंट्स. ईओएमएफ का पॉइंट सब कुछ हम नोट में लिखते. अब ईओएमएफ ही लिखो वहां पे, हम नोट में लिखते पूरे पॉइंट्स.
नहीं, मतलब आप नंबर्स डाल के बताओ मुझे. कुछ तो नंबर्स डाल के बताओ. इम्पॉसिबल. समझ में नहीं आएगा. Bearer check is where you get a check, you can go to the bank and take the cash. Obviously. जिनका नाम है उनको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, तो कुछ आईडी कार्ड दे शो. उनका आधार कार्ड लेके साइन करके दे देते. But generally whose name is written, they will only go and take the bearer check. Account पे check, cross check में क्या है? Cross check can be transferred to someone else, but account पे check cannot be transferred. दोनों में मेजर फर्क यही है. मतलब मैंने आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया जिस पे अकाउंट पे ही लिखा ही नहीं. अगर आपको किसी और को 1 लाख रुपए देना है, मैं आपको जो चेक दिया, आप वो चेक किसी और को दे सकते. क्रॉस चेक में दे सकते. पीछे आप टर्न करके लिखेंगे एंडोर्स टू सो एंड सो पर्सन. बट इफ आई गिव एन अकाउंट पे चेक, यू कैन नॉट ट्रांसफर दैट चेक टू एनीवन. दैट मनी शुड कम टू योर बैंक अकाउंट ओनली. दिस चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर टू समवन एल्स. Account pay लिखते हैं. Do 2 lines be drawn and write account pay. And in Negotiable Instruments Act, they never told that you have to draw 2 lines and write account pay left side top corner. But we do that because that is a more easy space. बीच में करेंगे तो मैटर का लिखेंगे, नीचे करेंगे तो साइन किधर करेंगे, इसलिए we write there. They only told that draw 2 lines and write account pay on the check, but they never told where to write. So some people write in center also. Still it's okay. Equity shares includes? No. Only equity shares. No. सर हो गया बेटा? दोस्तों बोलो यार. चलो लिखो नीचे नोट. Suppose gross total income of some person is 15 lakh. Gross total income is 15 lakhs, 15. Okay. And he donated to BJP, let's say, 20 lakhs through. Deduction is only 15 lakh. Deductions can never exceed your gross total income. Total income can never be negative. Obviously. Total income negative नहीं कर सकते कभी. The deductions cannot go beyond GTA. चलो हो गया बेटा. Shall we start? Right, note 1. Note 1. STT means Securities Transaction Tax. Securities Transaction Tax. Securities Transaction Tax. Number 2. In case of 112A, in case of section 112A, and 111A, in case of section 112A and what sir? 111A, comma, STT should have been paid. STT should have been paid. ठीक है ना बेटा? अब से हम STT शॉर्टकट यूज करते हैं. That acronym is okay. Next point. In case of 112A, in case of section 112A, in case of section 112A, comma, for equity shares,
Put a hyphen. Put a hyphen. For what beta? Equity shares. STT. Put a hyphen, put one dash. Okay, and write STT should have been paid. STT should have been paid. Both STT should have been paid both at the time of acquisition. STT should have been paid both at the time of acquisition. STT should have been paid both at the time of acquisition and transfer. Both at the time of acquisition and what beta? Transfer. मतलब परचेस कर जब STT पे करना चाहिए था और बेचते वक्त भी STT पे करना चाहिए था. समझ गए ना बेटा? Both at the time of acquisition and transfer. Next line. Next line, not next point. Next line. Okay? Next line, not next point. Right now. In case of units of EOMF, in case of units of EOMF, पता है ना अपने को क्या है वो? Full form लिखते हैं next point में. In case of EOMF or units of business trust, in case of EOMF or units of business trust, in case of units of EOMF or units of what beta? Business trust, put a hyphen, put a dash. STT should have been paid. STT should have been paid. STT should have been paid at the time of transfer. STT should have been paid at the time of transfer. Means what government is trying to say basically is that in equity shares, STT should have been paid on purchase also, sale also. Then only will apply this section. Then only section will apply. But for what do you call equity shares? I mean EOMF or business trust, STT should have been paid at the time of transfer. Then only section will apply. If not, section will not apply. समझ में आ रहा है बेटा? Next point. Provisions of section 111A. What is 111A beta? Short term wala. Provisions of section 111A will apply. Provisions of section 111A will apply only if provision of section 111A will apply only if the transaction of sale, only if the transaction of sale is entered, only if the transaction of sale is entered on or after, only if the transaction of sale is entered on or after 1/10/2004, on or after 1/10 beta 1st October, on or after 1/10/2004. So what I'm trying to tell you is that 2004 में ये सेक्शन आया भाई. समझ में आया क्या? सिंपल मीनिंग वो है, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं. स्टूडेंट आस्किंग, याद रखना जरूरी है कैसा 2004 जरूरत नहीं है. अगर अपन किधर है अभी 2023 में, एक साल हो गया तो 2024 में आते, मतलब 20 साल हो गए कहानी को. सर क्लियर है क्या? इंडिपेंडेंस थोड़ी है याद रखेंगे यार, ईयर डेट वर्ब. आर वी क्लियर? डन. दैट्स द स्टोरी ऑफ 112A एंड 111A. कितने नोट्स लिखे आप लोग? 4. Fifth note. EOMF means equity oriented mutual fund. EOMF means equity oriented mutual fund. Equity oriented mutual fund. Full stop. It could be in two cases, two scenarios.
It could be in two, what beta? Scenarios. It could be in two scenarios. It could be in what beta? Two scenarios. नीचे लिखो A point. A लिखते B लिखते, ठीक है ना बेटा? A point B point. A point. Minimum of 65%. Minimum of what beta? 65% of the total proceeds of the fund. Minimum of 65% of the total proceeds of the fund. Minimum of 65% of the total proceeds of the fund is invested in what beta? In equity shares of domestic companies. In equity shares of domestic companies. In equity shares of domestic companies listed on a equity shares of domestic company listed on a recognized stock exchange. हाँ, हम चाहते कि आप लिस्टेड शेयर ही खरीदे, अनलिस्टेड थोड़ी खरीदने देंगे आपको, बराबर है ना? हाँ, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ए पॉइंट हो गया. नेक्स्ट बी पॉइंट. बेटा बी पॉइंट में बोलने से पहले आप बोलो, मैं क्या बोलने वाला हूं? मिनिमम 90% in another mutual fund. Then, and that mutual fund invest minimum 90% in same equity shares of domestic company listed and recognized stock exchange. सीधा गए तो 65%. ऐसा घूम के जाना है तो 90 करो बेटा, और उसको भी बोलो 90 कर. समझ में आ रहा है ना? बी पॉइंट. In case the fund invests, INVESTS, don't forget that word S, INVESTS, in case the fund invests in another fund, in case where the fund invests in another fund which is traded on stock exchange, traded on stock exchange, traded. So म्यूचुअल फंड भी स्टॉक एक्सचेंज पे ही है, ये प्राइवेट नहीं है, ये भी स्टॉक एक्सचेंज पे ही है. क्लियर है ना? which is traded on stock exchange. Then minimum 90%. Then minimum what बेटा? क्या हुआ सुजल? Then minimum 90% of the total proceeds of the fund. Then minimum 90% of the total proceeds of the fund is invested. Then minimum 90% of the total proceeds of the fund is invested in units of such other fund. सब बराबर है ना? Is invested in units of such other fund, and such other fund. समझ में आ रहा ना बेटा ये? And underline करो बेटा, and underline करो. And such other fund also invest, and such other fund also invest a minimum of, such other fund also invest a minimum of 90%. Minimum of 90% of its total proceeds. Minimum of 90% of its what beta? Total proceeds in क्या लिखा आप लोग? A minimum of 90% of its total proceeds. इन मत लिखो, is invested, बराबर है ना? Is invested in equity shares of domestic companies. Is invested in
equity shares of domestic companies, equity shares of domestic companies listed on what बेटा? Recognized stock exchange. दोस्तों समझ में आ रहा है बेटा सबको? बेटा सर सिंपली क्लैरिटी के लिए हम लोग नीचे एक डायग्राम लिख लेते हैं, वो भी कॉपी कर लेते हैं. चलो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लेट्स ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम. सिचुएशन 1 क्या है बेटा? केस 1, minimum 65% is invested in what beta? Equity shares of domestic companies listed on. बराबर है ना दोस्तों? बोलो बेटा. केस 2 क्या है बेटा? minimum 90% invested in another fund, correct? No? And this another fund is also listed on recognized stock exchange. बेटा बराबर है ना? पॉइंट पढ़ लो आप लोग. बराबर है ना? And this another fund invest what beta? So just let me do something. Hold on. सब बराबर है ना? समझ में आया ना डायग्राम? बिजनेस ट्रस्ट यूनिट में सर यूनिट में बिजनेस ट्रस्ट में से सेलर को देना होगा एसटीटी, उसमें सेलर बाय दोनों शेयर्स में सेलर बायर दोनों को नहीं भाई. जब परचेस करते हो और सेल करते हो दोनों के टाइम पे पे करना पड़ता है. सेलर बायर की क्यों बात कर रहे हैं इधर? When we purchased, we should have paid STT. When we are selling, we have paid STT. नेट ट्रांजैक्शन में STT दोनों को लगता है. STT तो हमेशा दोनों को लगता है. एसटीटी उसमें दोनों को लगता है, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट में तो सिर्फ सेलर को लगेगा. अरे किसको STT लगता है उसकी बात ही नहीं कर रहे हम इधर भाई. किसको STT लगता है उसका बात ही नहीं कर रहे ना हम ये बोल रहे हैं कि भैया इक्विटी शेयर्स में जब परचेस करे और जब सेल कर रहे दोनों के टाइम पे STT पे करना चाहिए था, तभी सेक्शन अप्लाई होगा. इक्विटी फंड में बिजनेस ट्रस्ट में सेल के टाइम पे STT पे करना चाहिए था, तभी ये सेक्शन अप्लाई होता. मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि STT कब पे करना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि STT तब पे करेंगे तो ही ये सेक्शन अप्लाई होता है. फर्क समझ में आ रहा है ना? आप जो समझ रहे हो और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बता रहा हूं कि STT कब पे करना चाहिए. मैं आपको ये बता रहा हूं कि STT अगर दोनों के टाइम पे, परचेस के टाइम पे, सेल के टाइम पे, दोनों के टाइम पे करे तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा. समझ में आ रहा है क्या फ्रेंड्स? अंडरस्टूड और नॉट? Everybody, I am not talking about when we have to pay STT. I am only trying to tell you that in case of equity shares, STT should have been paid on purchase and sale. Then only the section will apply. Imagine आपने शेयर परचेस किए पर STT पे नहीं किए, सेल करते वक्त सिर्फ STT पे किए, तो ये सेक्शन अप्लाई होता ही नहीं. अगर अप्लाई नहीं होगा तो किधर जाएंगे भाई? जनरल रेट में जाके 20% लगेगी ना. अरे बोलना मेरे भाई, मैं STT कब लगेगा उसकी बात ही नहीं कर रहा ना मैं. वो मैं क्यों बात करूंगा? इनकम टैक्स क्यों बोलेगा STT कब लगेगा? मैं मतलब इनकम टैक्स. Why will income tax when STT will come?
करेक्ट ना? बोलो दोस्त. Capital gains on equity shares which we received as gift. Okay, imagine a case where your father gave shares as gifted to you. That transaction is not taxable. But tomorrow when you sell that shares, you have to pay the tax. No, you will reduce the cost. Cost is zero for you. But your father has got some cost, no? That cost will take it. But we all know that there is something called time value of money. जब परचेस करे 10 साल पहले परचेस करे उस दिन का कॉस्ट अलग है, आज का कॉस्ट अलग है. So for that reason they gave a small benefit in income tax known as indexation. We'll index that cost. How do we do that index? We learn in capital gains. But you have to pay on the gain. There's no escape, we have to pay. But we have some tax plannings in the law where you got some gain, use that money, buy a property, then you get some exemption so that you will not pay the tax. Like the special points are there in capital gain, which we learn in that topic, which comes in the exam every time for 6 to 8 mark. सर ये सारे कंडीशंस पे अगर एसटीटी नहीं होगा तो ये जनरल में आ जाएंगे फिर STD नहीं है तो जनरल में आ जाएगा. जनरल में तो 20% लगेगा, कोई डाउट ही नहीं है उसमें. शॉर्ट टर्म वाले भी ऊपर स्लैब में आ जाएंगे स्लैब में आ जाएगा तो बहुत डेंजर है भाई. अभी बिल्कुल मत सोचो कि स्लैब में आ गए तो अच्छा है. बिकॉज इमेजिन करो शॉर्ट टर्म कैपिटल 20 लाख रुपए है, 15% 20 लाख का कितना होता है भाई? 3 लाख रुपए. अगर स्लैब रेट में गए तो 10 लाख तक तो 10-20 पे जाएगा, उसके बाद तो 30% में जाएगा ना, वो ज्यादा टैक्स आएगा. वो स्लैब रेट और डेंजर है वो. दोस्त समझ में आ रहा है क्या सबको? एवरीबॉडी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? प्लीज स्पीक आउट एवरीबॉडी. गुड. चलो विल सॉल्व वन क्वेश्चन. राइट ऑन. Compute tax liability of Mr. Anand for assessment year 23-24. Compute tax liability of Mr. Anand for which assessment year, my dear friends? 23-24. Today I'll teach you something crazy concept. We'll learn about something called surcharge. We'll go crazy, don't worry. ठीक है ना? Salary 6 lakhs. Bracket TDS 1 lakh. Income from house property 3 lakhs. Long-term capital gains on shares STT paid 4 lakhs. Short-term capital gains on shares STT paid 3 lakhs. PGBP 8 lakhs. TDS 80,000. Income from other sources. Dividend income क्या इनकम बेटा? 1 lakh. That's it. और कुछ भी नहीं है इसको. If you understand question, I'm not trying to test your knowledge on deductions, ATTTA, TTB, उसका टेस्ट नहीं कर रहा मैं बिल्कुल. I'm trying to test your knowledge only on tax. Total income तो है ही. Deductions कुछ है क्या क्वेश्चन में? ATC है क्या? Political party है क्या? तो सीधा टैक्स ही करना है ना आपको. चलो भाई निकालो. Just one small point to add. TDS 10,000. ठीक है ना? सॉल्व करो बेटा. Compute tax. Get me the answer. Now. Yes बेटा. Where? Capital gain is different, dividend is different, no? Capital gain is what we get on sale of shares. Dividend is something like a return what we are getting on the shares. And dividend is taxable under income from other sources. So capital gain में dividend क्यों include होगा? तो उस पे हो या दूसरे पे हो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा उस पे? Capital gain taxability is different.
Dividend taxability is different. Dividend is taxable at normal rates. Correct, no? Capital gain is when we get from sale of shares, right? Dividend is only return. I'm sure you know what is dividend. Hmm? Hmm? Silent. तो क्या करेंगे? Normal. Question is silent on age. तो पता है आपको क्या करना है? नहीं पता. आनंद इज नॉट टेलिंग हिज एज. तो क्या करेंगे आप? बस खत्म करो. Two more minutes. After TDS. आप ना पहले बाइफरकेट करके टैक्स निकालो जो स्पेशल रेट से. और क्वेश्चन में लॉटरी भी नहीं दिया मैंने. लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग कुछ नहीं दिया मैंने. सेम 2,65,000. वंडरफुल. ठीक है. वंडरफुल मतलब सही नहीं बोल रहा मैं, गुड बोल रहा बस. आपका आंसर 47,500. दोस्त आपका आंसर क्या था? गलत हुआ. ठीक है. 2,54,600. आपका बेटा 65 है ना उधर. 256. वंडरफुल. नेक्स्ट बेटा आपका है उसमें 4 में. ठीक है. सात्विक हो गया. हाँ वही मैं एक्सपेक्ट किया कुछ तो नया आंसर आएगा. अभी 233,800. ठीक है. क्वेश्चन दिखाएंगे ये देख लो. 254,600 है ना बेटा? है उसमें देखते. 224. 223. अच्छा ठीक है भाई. ठीक है भाई. ठीक है. 223,400. हाँ 237. क्या बात है भाई, क्या बात है. आई एम लविंग दिस.
262, 600, 212, 500. बाप रे, 2,47,500 है ना, 500 नहीं है, ओ 2,47,000, 2,54, हाँ है ना दोस्त, है लिखा है, 2,65,000 भी लिखा है, 2,54,600 भी लिखा है। बेटा आपको कुछ नया आंसर, 3 लाख चेंज बोलना यार कोई, 3 लाख, हाँ बोल 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 बोल, हाँ अरे आया यार एक 3 लाख पे सच में, 1,76,600, अरे बाप रे। स्टैटिस्टिक्स में आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा क्या, रेंज, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मुझे मोड ढूंढना पड़ेगा इसमें। अरे बाप रे कितना आंसर निकाले यार, एक तो 12-13 आंसर है, और अभी थोड़े लोग ऐसे हैं जिस अभी तक बताए नहीं मेरे पास मुझे आंसर, उनका ऐसा लग रहा है इतने आंसर का रिएक्शन ही नहीं है तो मेरे आंसर का क्या होगा। 4 लाख भाई सच में आएगा 4 लाख, ठीक है। आई स्ट्रांगली विश दैट द एक्चुअल आंसर विल बी मैचिंग विद वन ऑफ दिस आंसर, ठीक है। लेट्स चेक, कम ऑन। First of all, sir, in the question, there is no need to calculate gross total income. Total income directly. Because deductions are 0. बोलो, by the way, salary income कितना है? Salary says 6 lakhs. Property 3 lakh. House property 3 lakhs. LTCG 4 lakh. Long-term capital gains 4 lakhs. Short term capital gains 3 lakh. Short-term capital gains 3 lakh. Sir, basically, I'm directly writing LTCG, STCG, capital gain only, no? How to calculate that capital gain, we will learn in capital gains chapter. Yes, sir. I wrote income from house property, no? How to calculate that income, we learn in house property chapter. I wrote income from salaries, no? How to calculate that salary, we learn in salaries chapter. That is why I told basics are extremely important. Then the things will go more deeper. Then we will become taller, stronger and sharper. और नेक्स्ट और क्या है, ये ऑनलाइन में कोई जवाब दिया 265, ये लिखे क्या हम लोग, ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बोलो, डिविडेंड कितना है, 1 लाख। पीजीबी भी दिया ना मैंने, ठीक है, पीजीबी ठीक है बेटा। टोटल बिकम्स ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम चलेगा, क्यों, डिडक्शन चैप्टर 6 से कुछ है ही नहीं, तो जीटीआई वही टोटल इनकम बनेगा, कितना है बेटा, ओ बराबर 25 लाख आएगा, ठीक है, सुपर। लेट अस सॉल्व इन दिस 25 लाख, फर्स्ट LTCG at the rate of 10% on amount exceeding is equal to कितना है मेरा कैपिटल गेन, मेरा कैपिटल गेन है कितना बताइए, 4 लाख। तो क्या करेंगे बेटा, 4 लाख माइनस 1 लाख इंटू विच इज 30,000। एक्ट ने बेनिफिट दिया है, एक्ट ने बेनिफिट देना है 1 लाख के ऊपर कोई टैक्स करो, मतलब 1 लाख तक हम टैक्स करेंगे ही नहीं, और हर ट्रांजैक्शन का 1 लाख नहीं मेरे भाई, साल का हर ट्रांजैक्शन 1 लाख बोलेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे 99,999 बाटा का प्राइस। बेटा समझ गया ना, सुशील क्या हो गया, तेरा आंसर गया, हाँ that's why I took 10%, no? अरे what if STD is not paid? 20% tax on 4 lakhs. If STD is not paid, it will come under which category? General rate. 20% लेता था मैं, 4 लाख पे 20% लेता था अब तो बेटा एसटीडी पे करे, इसलिए तो मैं 112 अप्लाई सेक्शन अप्लाई कर रहा ना बेटा यहाँ पे। अरे मैं जो ये कैलकुलेट किया बेटा, मैं कौन सा सेक्शन अप्लाई करके किया, 112A। अगर एसटीडी पे नहीं करे होते तो कौन सा सेक्शन आता था, फिर 112 आता था, तब टैक्स रेट क्या होता था, 20%, पूरे पे 20 ना दोस्तों। बेटा समझ में आ रहा है आपको, अरे रिएक्शन दो यार, कुछ समझ में आया क्या अभी।
एसटीडी पे करे इसलिए तो 112 सेक्शन आया ना. एसटीडी पे नहीं करते तो क्या होता था? 112 सेक्शन आता था. 112 आया तो क्या रेट होता था? 20%. क्लियर बेटा? आपको समझ में आया 4 लाख पे क्यों नहीं? हाँ हाँ क्या सर? हाँ चलो, आर वी क्लियर? कैन आई प्रोसीड? 3-4 लोग का चेहरा बदल गया गया. आंसर खत्म ही नहीं हुआ अभी तक, 3-4 लोग का चेहरा खत्म. चलो नेक्स्ट. और क्या है? STCG at the rate of under section 111A. STT पे करे इसलिए तो 15% ले रहा हूं मैं. अगर STT पे नहीं करते तो क्या करते थे? स्लैब रेट्स नॉर्मल में इंक्लूड कर लेते. बराबर ना भाई? हाँ कितना है? कैसा इसका कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल? 3 लाख ना. 3 लाख का 15% 45. बराबर है ना? कार्तिक, यू आर स्टिल in the game? Wonderful. How many of them are still in the game? Oh my God. Wonderful. Good. चलो. Balance कितना है बेटा? हाँ? 18 lakhs, no? Wonderful. Some people in the exam, what they are doing, you know, balance they are taking 19 lakhs. क्यों 19 lakhs दे पता है? वो बोल रहे 3 लाख इधर गया, 3 लाख इधर गया, 6 लाख गया. 4 और 3 साथ गया ना भाई. बड़े लोग क्या कर रहे हैं? इधर तो 3 पे ही टैक्स कर रहे हैं ना, तो 1 पे तो उधर टैक्स करना चाहिए ना. ये ऐसे किया है इसलिए हंस रहा है ये. भाई तू ऐसे किया ना? हाँ ये किया क्या? तू क्या किया कंप्लीट? 17 दिया. ओ ये निर्मला सीतारमण का बड़ा भाई है, छोटा भाई नहीं बड़ा भाई है. चलो चलो गेट बैक. चलो बेटा 18 लाख मतलब सर ये फटाफट बोल देते यार हम लोग. तो 18 लाख मतलब अप टू 2.5 लाख तो जीरो है. 2.5 लाख से 5 लाख 5% 12,500. 5 लाख से 10 लाख 1 लाख तो 1,12,500 हो गया. और 8 लाख पे 30% 2,40,000. बराबर ना? कितना हुआ इस पे टैक्स? 3,42,000. हाँ ठीक है 10,000 बहुत फर्क पड़ता है. पहले बहुत आंसर है अपने पास. 3,52,500 बराबर है क्या? कैलकुलेट समझ गए ना? लिखू क्या पूरा 2.5 लाख 2.5 से 5? आपको तो पता है ना भाई कैसा करना है. चलो अभी many are still in the game. They are still in the game. बोलो टोटल कितना है? 4,27,000. करेक्ट है? Add 17,000. 446 444 444 444 600 total including HSA minus 1 lakh 2,54,600. How many of you got this answer? Oh, good, brilliant, nice. So the final answer of tax bill is 2,54,600. I think, all said and done. I hope we got full clarity on how to calculate tax whenever capital gain is also there, beta. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स एवरीबॉडी? और मुझे अभी तक एक क्वेश्चन एक आंसर का लॉजिक ही नहीं समझ में आया. ये आंसर कैसा आया भाई? जिसको भी आया, किसका आंसर था ये 1 लाख चेंज? कैसा है बेटा? अच्छा एसटीटी पे नहीं करते तो फिर इनकम टैक्स आता ही नहीं. ओ माय गॉड. और ये 254 ये सही है. 56 कैसा है? 2,000 कैसे बढ़ा दिया आप लोग? कोई तो बोला, बोलेगा भी नहीं कौन बोला ये. ये 3 लाख चेंज वाला तो ये था. बोला भाई क्या किया? सब कुछ क्वेश्चन साइलेंट किधर है? क्वेश्चन साइलेंट किधर है? हाँ एज साइलेंट है.
हाँ ये 4 लाख वाला बड़े साहब किधर है वो? हाँ हाँ बोलना भाई, कैसा है भाई? वो बोल रहे हैं पता नहीं, मुझे भी पता नहीं सर, आ गया पर ऐसे ही हो, कुछ तो किया। ठीक है, anyways, fun aside, I hope we got a good clarity on the concept, my dear friends. Can we solve now a consolidated question where everything is there? That potential has come to us, all of us. I think we got some great basics of income tax, my dear friends. There is still long way to go. Lot of work is still pending. We have just still started off. Okay, picture अभी बहुत बाकी है, तो बहुत करना है बाकी है, ठीक है ना बेटा? चलो एक छोटा ब्रेक लेते, पर उससे पहले एक बार रिवाइज करके ब्रेक लेते। जो अभी जो किए पूरा रिवीजन लास्ट 4-5 डेज का लास्ट में करते हैं आज, बट एक बार अभी तक जो करे वो रिवाइज करते हैं लेटेस्ट। बोलो बेटा 112 जनरल रेट क्या है? 20%। 112 ए बेटा प्लीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. सेम केस अगर शॉर्ट टर्म में बेटा 15% पूरे पे। और यहाँ पे 112 में वो ये भी बताया कि भैया अगर शेयर्स की बात कर रहे हैं आप, परचेस के टाइम पे सेल के टाइम पे दोनों के टाइम में एसटीडी पे करना चाहिए था, तब हम सेक्शन अप्लाई करेंगे। बराबर है ना? गुड। 115 बी बेटा, 115 बी ई अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर फ्लैट 60% प्लस 25% प्लस 4%, effectively 78%. That's it. Beta clear hai abhi tak? So we'll take a break. After break, we'll talk about something very interesting concept about surcharge, and we'll solve a lot more interesting questions. And I'm seeing 4-5 students coming to class without calculator. Don't do that. Calculator leke aao beta, please. Chalo, take a break.
Costing हो गया, basic concept first chapter चल रहा है. Segregation से बोर हो गए. Implicit cost, explicit cost पढ़ा दिया सर. हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है वो. जैसे सबसे पहले पब्लिक म्यूचुअल फंड खोल रही है. म्यूचुअल फंड उसमें से 90% वो अगले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे. हाँ अगले जो म्यूचुअल फंड फर्स्ट म्यूचुअल फंड वो सेकंड म्यूचुअल फंड में 90% इक्विटी में. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं यार. इक्विटी क्या है फिर? म्यूचुअल फंड में इक्विटी रेट क्या होता है? इक्विटी शेयर में डाल बराबर. क्या है वो? क्या है रियलिस्ट? टैक्स लगेगा 10%. लॉन्ग टर्म है तो, शॉर्ट टर्म है तो 15%. क्या हो गया भाई? Yes, get back, my dear friends. Come on, are we ready? Everyone. So I think we spoke a lot today about the concept of capital gain. I think we got a very good clarity, my dear friends. What is section 112? General rate for long-term capital gain. What is the general rate? 20%. Short-term capital gain. General rate. Normal rates. Special case. 15%. LTC is special case. 10% on amount exceeding 1 lakh. I'm sure we got a good clarity on this concept. Everybody fully clear, sir? All of us? Good, fair enough. Let's proceed. So friends, we discussed about how do we calculate tax when all the heads of income are there and how do we take the deductions. That part of clarity we have got. Clear? I'll ask you 1-2 questions now. Think very properly and tell me the answer. Okay? There is one person, Mr. A. This gentleman age is 45 years. This man has got long-term capital gains on sale of equity shares, which are STT paid. ठीक है ना? बराबर है ना बेटा? STT paid. And the figure is 4 lakh. Okay? And there is no other income. Or let us say small change first. ₹2 lakh. Okay? And there is no other income. What will be the tax? रिबेट है. रिबेट क्यों लेके आए तुम्हारे भाई? Oh my God, STT paid. ठीक है, बोलो. क्वेश्चन समझा क्या? केस समझ गए ना मैं क्या पूछ रहा आपसे? 2 लाख रुपए आए भाई कैपिटल गेन, एसटीडी पेड वाला है, मतलब जिस पे 10% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख वाला कहानी है ये. तो मैं पूछ रहा आपसे, उसको कुछ और इनकम है ही नहीं, तो टैक्स कितना आएगा उसका? ये मेरा क्वेश्चन है. हाँ, ये बहुत होशियार हो गया ये जवाब दे रहे हैं सर. नॉर्मली तो 10,000 लगना चाहिए, बट अब हमको पता है आप कुछ तो एक्सेप्शन बोलेंगे अभी, उसके लिए आपने क्वेश्चन पूछा है. So tax is 0 in this case. What they told in the law is, what is the basic exemption limit for individual normal category? 2.5 lakhs. What they told is that if the 2.5 lakh is not utilized, then you can utilize towards 112 or 112A or 111A. अरे समझा क्या मैं क्या बोला? Speak out, all of us. And I'll repeat again. Question. सुनो ध्यान से. One person, Mr. X. This man has got long-term capital gain on sale of land. ठीक है ना बेटा?
बोलो. And he has got salary income 1.2 lakh. That's it. और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. इसका टैक्स कैसे निकालते बेटा बोलो? पहले तो ये 1.2 लाख पे टैक्स जीरो हो जाएगा, बराबर है. एक्चुअली इसका एज 33 इयर्स ले लो बेटा. तो बेस कमीशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख. कितना यूज करें हम? 1.2 लाख. बचा कितना? 1 lakh. Now what they told in the law is tax under section 112 is reduce 1.3 lakh, on balance only pay 20%. समझ में आ रहा है क्या आपको? Now I repeat once again. I'll tell in proper English language, then I'll tell in proper Hindi. I will try. Okay? English I will tell, Hindi I will try. Yeah, proper English language is that unexhausted basic exemption limit can be utilized towards capital gains under section 112 or 112A or 111A. Yes, sir. हिंदी में बोलना है तो भाई 2.5 लाख तो यूज करना है ना. कितना यूज कर लिया आप? 1.2 लाख. मतलब 1,20,000 तो हो गया ना. गवर्नमेंट क्या, आप क्या बोल रहे हैं? और 2.5 लाख तक जब टैक्स जीरो है, 1,20,000 यूज किया, बाकी 1,30,000 तो बच गया है ना. तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? बेटा उतारो मत तू, ठीक है ना. तेरा दूसरा इनकम जो 3 लाख है, जिसपे आपको 20% भरना चाहिए था, उसमें से तू एक काम कर, 1,30,000 माइनस कर. क्यों माइनस कर? क्योंकि 2.5 लाख तक तो टैक्स जीरो होना चाहिए था ना. आपने 1,20,000 यूज किया ना, बाकी इधर यूज कर. गवर्नमेंट बोल रहा है गलत है ये. अरे पागल हो गए, गलत क्या? अच्छा है यार. Is it a benefit or not? Speak out, man. Are we getting clarity or not? This concept is technically called shifting. What do we call it? Because unexhausted base commission limit we are using towards capital gains. समझ में आ रहा है क्या? बेटा बोलो. इमेजिन करो ये 1.2 नहीं है, ये 2.2 है, तो क्या करते थे? 30,000. ये 3.2 है, कुछ भी नहीं होता. मतलब जो 2.5 लाख अब यूज नहीं कर पा रहे, भाई इसको यूज कर लो बोल रहे यार वो लोग. समझ में आया क्या? बोलना मेरे भाई. पक्का क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा बराबर से. रेडी है ना? पक्का? सोच के बोलना. क्या करके बोलना? वन पर्सन हैज गॉट सैलरी इनकम 60,000, ठीक है ना. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स STT paid, ठीक है, 1 lakh. Long term capital gains on shares STT paid 1.1 lakh, ठीक है ना. And long term capital gain on sale of building. Somebody is asking STT paid है क्या सर? अबे on building, let us say 90,000, ठीक है ना बेटा. ये स्टोरी है मिस्टर एक्स का. समा टेलिंग, हमेशा लड़कों का ही बोल रहे हैं आप, ठीक है. मिस एक्स का एज्ड 25. बोलो भाई, क्वेश्चन समझे क्या? हाँ, अब मुझे बताओ, कॉमन सेंस यूज करके बताओ, बेस कमीशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख. पहले किसको यूज करेंगे आप? क्योंकि जो नॉर्मल टैक्स लगाना है उसको यूज करना है ना अपने को. 60,000 इस पे टैक्स हो जाएगा तुम्हारा जीरो. फिर किसको यूज करेंगे? अरे लॉन्ग टर्म दो लिखा मैंने वहां पे, 2 लिखा मैंने. किसको यूज करना है? शॉर्ट टर्म. अरे क्या बेटा यार, मजाक कर रहे क्या यार? शेयर्स. अरे शेयर्स में 2 लिखा ना मैं यार. लॉन्ग टर्म शेयर्स बोलना यार. सर मैं वापस पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, प्यार से पूछूंगा बेटा, ठीक है. कंट्रोल शिवा, ठीक है, प्यार से पूछ. सैलरी 60,000 हो गया, मतलब 2.5 लाख में 60,000 यूज कर लिए, बाकी बचा कितना? 1.9 लाख. उसके लिए भी कैलकुलेटर क्यों मेरे भाई? 1.9 लाख. वो किसी ना किसको तो यूज कर सकते ना. बोलना भाई, किसको यूज करना है आपको? हाँ, LTCG of building. What's wrong with you, Karthik? LTCG of shares tax is what rate? 10%. Building is 20%. So use it for building first, man. एक्ट ने कभी बोला नहीं कि इसको पहले यूज करो, उसको पहले, उसको इसके पहले यूज करो. कॉमन सेंस यूज करो पहले. शेयर्स का 10% है. आई मीन जोक हो गया है. शेयर्स का 10% है ना भाई.
बिल्डिंग का क्या रेट लगता था? 20% ना. थोड़े लोग बोल रहे सर एसटीसीजी को यूज कर क्यों नहीं कर सकते? अरे वो तो 15% है ना. अरे तो पहले 20 वाले को यूज करो ना यार. समझा क्या? जा रहा है क्या दिमाग में? ये 90,000 पे क्या करेंगे हम? टैक्स इज 0. करेक्ट. तो बेसिकली इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, व्हाट इज द बेस कमर्शियल लिमिट वी हैड? 2.5 लाख. फर्स्ट हमने इधर यूज कर लिए, सेकंड इधर यूज कर लिए. कितना हो गया? 150 हो गया. बचा कितना? 1 लाख. इधर यूज करेंगे, इसको यूज करो और टैक्स बोलो इसका भी 0. और इस पे जब हम टैक्स निकालेंगे 1.1 लाख माइनस 1 लाख इंटू क्या भरना चाहिए था और क्या पे कर रहे हैं. दोस्तों को समझ में आ रहा है क्या? सबको क्लियर है क्या बात? समझ आस्क मी इन द ब्रेक. सर अगर मेरे पास कुछ भी इनकम नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो क्या होगा? मैंने उनको बोला रुक जा भाई, ब्रेक के बाद बता दो. यार समझा क्या कॉन्सेप्ट? इज इट ब्यूटीफुल और नॉट? And Karthik, let me tell you once again, there is never not law told use for shares first, then for building. It's pure logical common sense that building is 20% tax, so use for that first. Then use for 15%, then use for 10%. Tax जैसा बचा है वैसा यूज करेंगे ना यार. पक्का क्लियर? Can I proceed? Done. सर आपका बेस कमीशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख. बराबर है. कितना यूज करें आप फर्स्ट? पहले 60. बचा कितना अभी? 1,90,000. 1,90,000 यूज करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है. ये 3 ऑप्शन में आप कौन सा चूज करोगे? जिसका टैक्स रेट ज्यादा है. किसका ज्यादा है? 20% किसका है? बिल्डिंग का. उसका यूज कर ले 90,000. बचा कितना अभी तुम्हारे पास? 1 लाख. वो 1 लाख या तो आप एलटीसी को यूज कर सकते हैं शेयर्स का, या एसटीसी शेयर्स का यूज कर सकते हैं. पर किसको यूज करेंगे आप? एसटीसी शेयर्स का, क्योंकि उसका 15% टैक्स है. 15% है ना उसका, तो इसका यूज कर लो. हो गया तुम्हारा 2.5 लाख एग्जम्पशन लिमिट, जिसकी वजह से तीनों का चीजों का टैक्स 0 हो गया. बचा हुआ कितना? 1,10,000. उस पर तो 1 लाख तक टैक्स लगता ही नहीं है. बचा हुआ कितना? 10,000. उस पर कितना परसेंट? 10%. हो गया 1,000 रुपए. बराबर है ना? होल्ड ऑन, आस्क. सर ये प्रायोरिटी फिक्स्ड है क्या? अरे प्रायोरिटी फिक्स्ड है क्या? नहीं भाई, तू उसको ऐसा यूज करना यूज कर. कौन मना कर रहे हैं? अगर तुम अपने को चुल है, मतलब हम लोग ऐसा हैदराबाद में ऐसे ही बोलते हैं, अपने को चुल है तो पे करने का, ज्यादा चुल है तो पे कर भाई. मतलब क्या बोलते हैं यार मराठी में, क्या बोलते हैं पता मुझे. हाँ, अपने को कीड़े है तो पे करना भाई. हम लोग हैदराबाद में थोड़ा चुल चुल बोलते हैं हम लोग एक कीड़े को. उधर वो आदत है हैदराबाद में. ठीक है. अरे अपने को कीड़ा है तो पे करना भाई. मना क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तो बिल्कुल भी मत पूछिए कहां पे लिखा है, कौन सा पहले यूज करना. किधर में लिखा है? एक्ट में. एक्ट में इतना ही लिखा है. एक्ट में 112 में बोला है यूज कर लो. 112 में 112 ए में बोला यूज कर लो. 111 ए में बोला यूज कर लो. ये कभी प्रायोरिटी बोला नहीं. अपने मर्जी है यार. अगर आपको इतना प्यार है मोदी जी पे तो पे करो भाई. ये डाउट था सर, अमाउंट वाइज जैसे अगर देखें हम लोग, अगर एलटीसी में अमाउंट अगर ज्यादा हो जाता है, एलटीसी अमाउंट ज्यादा है तो 1.1 लाख की जगह 2.1 लाख या 3. हाँ तो ये उसको यूज करेंगे क्या? मतलब अरे उसका 10% टैक्स है, उसका 15% टैक्स है ना यार. अमाउंट से क्या फर्क पड़ेगा? रेट तो देखना यार. अरे यार ये 1.1 की जगह अगर 3.1 होता तो उसको यूज करते क्या? रेट फर्क पड़ता ना यार. अमाउंट ज्यादा कम से क्या फर्क पड़ना है यार? सर 2 + 3 is 5. 3 + 2 also is 5 only. अभी कोई तो डाउट पूछ रहा था इधर. हाँ बोलना बेटा. वंडरफुल. सेम क्वेश्चन था. आई वाज अबाउट टू टॉक नेक्स्ट. ठीक है सर, यहां तक क्लियर है सबको? एवरीबॉडी सर. 87A is not applicable to long-term capital gain under section 112A. 112A का ही बोले, उन्होंने अप्लाई नहीं करेंगे. In 112 section, अच्छा स्टूडेंट कैन आस्क सर ये पॉइंट कहां पे लिखा है? दिस पॉइंट इज नॉट रिटन इन 87A. दिस पॉइंट इज रिटन इन 112A. ओ माय गॉड, समझ में आया क्या दोस्तों? दिमाग में जा रहा है क्या पॉइंट सबको? रुको रुको जरा. हाँ सबर करो. अरे रुकना मेरे भाई.
शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, तुमको जो करना है करना। सर फिर वो बेसिक एग्जाम्पशन को उधर एडजस्ट कर दूंगा, उधर से रिबेट ले लूं। सर ये याद है ना वेबसाइट? समझ स्टेलिंग सर देखा सर का लग रहा है, और ये देखा सर का क्या है यार, इतने बार देखा आपको मैंने। ये आ गया आपका कौन सा सेक्शन है ये? 112। ये सेक्शन में बेटा एंड में क्लियरली लिखा है सर, ये देखो 112 है सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 प्रोवाइडेड दैट, मतलब क्या? प्रोविजो, बराबर ना? नीचे पढ़ो, इसमें एक्सप्लेनेशन में मिलेगा आपको। इसको क्या हो गया भाई? 6th point 5th point कहां पे? या see this, where the total income of an assessee includes any long-term capital gain referred to in subsection rebate under 87A shall be allowed from the income tax on total income as reduced by tax payable on such capital gain. That means on this capital gains tax you can't use rebate. समझ में आ रहा है क्या? But like this point, they never told in other sections. In 87A rebate, specifically they told this 87A rebate will not come for LTC under 112A. Getting clarity, everybody? Speak on, my dear friends. Ultimately, they never told in the law where to use first, where to use next. It is all your choice. Wherever you think the tax payable will be less, use there. LTCG on 112 यूज कर सकते। LTCG 112 वाला यूज कर सकते। किधर? रिबेट क्या? एक्ट में तो कुछ लिखा नहीं उसके बारे में। In act they wrote only in 112A. They didn't write in 112. That means technically you can use it since they're silent. Correct, no? Because let's take a scenario like this. Let us say one person has got a long-term capital gain on sale of building. Imagine, this will take some time. A person has got a long-term capital gain on sale of building. ठीक है? उसके पास और कोई इनकम नहीं है. And this figure is 50,000. क्या करेंगे बोलो? बेसिक एस्टिमेट तो टैक्स 0 हो जाएगा, बट टैक्स इज द रेट ऑफ 20% अज्यूम करो. दिस हाउ मच? 10,000. बट इफ आई टेक रिबेट अंडर 87A, I will take how much? 10,000. Then tax will become 0. Here rebate is possible. Correct, no, but rebate is not possible for 112A. बेटा समझ में आ रहा है क्या? सर मुझे एक बात बोलो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है क्या? ये जो सेट ऑफ करने का, यूज करने का कॉन्सेप्ट अच्छा है या नहीं? बोलो यार. But they clarified in the law, this benefit I will give only for a resident individual. If you're a non-resident, this privilege will not give. If you're HUF, why apna uff, then will not give this benefit. This benefit is only for resident. Clear है बेटा? सबको समझ में आ रहा है ये बात? पक्का सर? Let's put side heading special point. Please put side heading special point. Write down. The unexhausted basic exemption limit the unexhausted what beta? Basic exemption limit can be utilized towards long-term capital gains, or short-term capital gains, under section 112, 112A, बराबर ना? 112, 112A and 111A.
Clear now? Friends, full stop. Continue. This benefit is only in case of this benefit is only in case of what beta? Resident individual. This benefit is only in case of resident individual. Second special point. Rebate under section 87A is not allowed in case of long-term capital gains. In case of long-term capital gains covered under section what beta? 112A. Covered under section 112A. Clear now, friends, everybody? I hope we are clear with this, everyone. So it's all your smartness. How do you adjust it and try to make your tax as less as possible? Are you understanding, everybody? In fact, 1000 रुपए पे करने का जरूरत भी नहीं, ऐसा भी मैनेज कर सकते हैं हम. In what way? वो एक काम करो, इसको इधर यूज करो, उसको रिबेट के लिए उसको सेट ऑफ करो. Provided rebate will come only when total income is not more than 5 lakhs. ये कितना हो रहा था टैक्स इनकम? 60, 160, 270, 3.5 लाख. वो भी कर सकते हैं हम इधर. समझ में आ रहा है क्या आपको? क्यों? 15,000 आएगा तो 15,000 आएगा तो रिबेट कितना हो रहा है? 2,500 आएगा. 1,000 रुपए आएगा फिर इधर. का जो शेयर्स का है उसमें से थोड़ा अमाउंट लेके और एसटीसीडी शेयर्स में से थोड़ा सा अमाउंट एग्जेम्पशन में लेके और उस हिसाब से एडजस्ट करके एग्जेम्पशन. सर वही बोल रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं. अल्टीमेटली आपको टैक्स बचा, जितना कम कर सकते हो उतना कर सकते हैं आप. गवर्नमेंट का फंडा कितना है क्या है बोलूं? 2.5 लाख तक भाई तेरे को जैसा खेलना है वैसा खेल. हम तेरे को कुछ नहीं बोलते. तू 2.5 लाख के नीचे है भाई, हमारे को तुम पे कोई क्या बोलते यार इंटरेस्ट नहीं है. समझ में आ गया ना? बट आप ये नहीं बोल सकते मुझे लॉटरी आया लाख रुपए का, मेरे पास कोई इनकम नहीं है, 2.5 लाख यूज कर लू क्या? चप्पल लेके मारेंगे बर 30%. So this benefit of unexhausted limit using is only for long term and short term, not for your lotteries, casual incomes. So getting clarity? वो पॉइंट में लिखते हैं. चलो अब कुछ डाउट पूछ रहे थे इधर कोई, बोलना बेटा. रिबेट आएगा ना फिर, बाकी पे यूज कर सकते रिबेट. यू कैन नॉट यूज रिबेट फॉर दिस. For whatever tax payable under 112A, for that you can't use rebate. तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था ना, वही इसको यूज कर लो और बाकी पे सेट ऑफ करो. I mean in this example here 1,60,000 is gone here and 90,000 is gone here, so 1 lakh is still left. No, in that 1 lakh use 10,000 towards this one. Use 10,000 towards this one and try to use balance 90 towards short term capital gain. तभी भी गड़बड़ हो जाएगा. क्यों बोलो? 90 यूज करें तो बचा कितना? 10,000. 10 में 15% करके तो 1,500 होगा. तब उसको रिबेट यूज करके हम 0 कर सकते हैं इसको. समझ में आ रहा है क्या आपको? सर मैथमेटिक्स बोल रहा हूँ, आप सुनो, आप लोग सुन लो ध्यान से. सर लेट मी रिपीट अगेन, लिसन केयरफुली. सर 60,000 पे तो टैक्स 0 है, ये तो पक्का है. सर ये सब मैं जो बता रहा हूँ आपको एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, ये सब अपना टैलेंट है, कैसा यूज करेंगे हम. 60,000 पे टैक्स 0 हो गया, उसके बाद तो पक्का बिल्डिंग को यूज करना है. इस पर तो कोई सेकंड डाउट नहीं है, थॉट नहीं है, क्योंकि उसका 20% टैक्स है भाई. उसको पूरा यूज कर लो. खत्म हो गया. बचा कितना? 1 लाख. 1 लाख में से 10,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल शेयर्स का यूज करो. वो भी 0 हो गया. बचा कितना?
90,000 आप STCG शेयर्स का यूज करो। ST शेयर्स कितना बचेगा? 10,000। 10,000 का 15% 1,500, रिबेट ले लो 1,500, टैक्स तुम्हारा 0 हो जाएगा। 1,000 रुपए भी क्यों भरू भाई? प्रैक्टिकल इतना दिखता नहीं यार, मतलब जो बंदा 2.5 लाख मतलब इतना कर रहा है वो सिर्फ 2.5 लाख ही थोड़ी कमाएगा यार, वो भी तो कैसे नहीं यार। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, लॉ नेवर टोल्ड पहले इसको यूज करो बाद में इसको यूज करो। लॉ नेवर टोल्ड दैट, इट इज योर चॉइस, योर प्रेफरेंस। एंड गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड बिकॉज अरे भाई 2.5 लाख के नीचे लोगों को ऊपर हमको दिमाग चलाना नहीं है, तुमको जो करना है कर, बट लॉटरी पे यूज करने नहीं देंगे, उधर तो यूज करने नहीं देंगे भाई। समझ में आया क्या? क्लियर? लिखो क्या बोला था मैंने? सीनियर सिटीजन से अगर 3 लाख से एक्स्ट्रा 50,000 यूज कर लेंगे। अगर इस केस में सीनियर है तो टैक्स तुम्हारा 0 हो जाएगा, बराबर ना? आ सकते ना, ऑब्वियसली पॉसिबल, ऑब्वियसली व्हेन एवरी सेट ऑफ इज करेक्ट। सी फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने बताया 2 मिनट पहले, अगर अपने को लगता है कि 10% को यूज करूंगा मैं, 20% गवर्नमेंट को पे करना है मुझे, आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन, क्या बोलते हो वो कीड़ा है, तो क्या कर सकते? गलत थोड़ी है वो, देशभक्ति है। नहीं है अनएक्सप्लेन्ड, उसके ऊपर आपको यूज करना है भाई। हाँ लिखो, राइट ऑफ अनएग्जॉस्टेड, स्पेशल पॉइंट में, थर्ड पॉइंट क्या? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, unexhausted basic exemption limit cannot be utilized towards tax payable under section 115BB or section 115BBE, बराबर ना? cannot be utilized towards tax payable under section 115BB or 115BBE. Happy? Wonderful. दोस्तों क्लियर है? पक्का? So let me ask you one more question. सोच के बोलना, ठीक है? One person misses Y, ठीक है? She has got, her age is 61 years old. Control. Long-term capital gains, STT paid 6 lakhs. और कुछ इनकम नहीं है मेरे भाई, ठीक है? तो क्या करेंगे अभी बोलो? हाउ डू वी कैलकुलेट टैक्स? 0 कैसा हुआ मेरे भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स इज इक्वल टू 6 lakhs माइनस 1 लाख। 1 लाख तो माइनस करना ही है, 1 लाख तो माइनस करना ही है। क्यों? अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख पे टैक्स लगेगा ना भाई। माइनस 3 लाख विच इज योर बिल, नॉट बिल, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट into 10%। बोलना भाई, how much is that? 20,000। बोल क्या प्रॉब्लम है इसमें? When did I say cannot be used? Can you read it out? रिबेट नहीं आता, मैंने ये कब बोला कि यूज नहीं कर सकते? इसमें कुछ गलत है क्या? अरे बराबर क्या नहीं? बस आया 6 लाख बट भरेंगे टैक्स 20,000, मतलब 20,600 रुपए, 800 रुपए, 800 आएगा ना? 800 रुपए, 800 है ना बेटा? ठीक है बेटा। सर वी क्लियर विद दिस? यार बोलना बेटा, एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस जेड, एज 61, 81,
क्या हुआ? सैलरी इनकम 3 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख. दोस्तों समझ में आ रहे? नेक्स्ट, LTCG on building 60,000. Or let me do one thing. We'll directly take this. LTCG STT paid 2.5 lakhs. How do I calculate tax? From 2.5 lakhs, straight away first I'll reduce, and I'll also reduce another 1 lakh base commission which is not utilized. 4 लाख यूज करें ना यार, इस पर टैक्स 0 हो जाएगा, 5 लाख तक तो 0 ही है. On the balance 10%, 5,000, 5,200. yes, ये चीज तो ऐड करना है कभी भी. बेटा सबको क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट? Everybody getting clarity on this concept? Take 1-2 examples. मिस्टर मिसेस वाई का STT पेड नहीं है, तो 20% ना, 20% लगेगा बराबर. इधर 6 लाख माइनस 1 लाख इसलिए है क्योंकि 112A में गया है. अगर बिल्डिंग होता था, इट वुड हैव बीन कम अंडर 112. इट इज 112 डायरेक्ट 6 लाख माइनस 3 लाख इनटू 20%, माइनस 1 लाख आता ही नहीं ना. मजा आ गया. गुड. व्हाट मैडम? ये फर्स्ट चैप्टर का नाम चेंज करना चाहिए. अननेसेसरी लगा है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एडवांस कॉन्सेप्ट्स ही. सच बोलो तो आपका ऐसे मटेरियल देखेंगे तो आपको ये सब मिलता ही नहीं उधर. ये सब अपने अपने जगह पे उधर उधर वो चैप्टर ये चैप्टर में है, बट ये सब कुछ मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ बिकॉज यू विल बिकम वेरी स्ट्रांग. द मोर रूट्स आर स्ट्रांग, द मोर परफेक्ट यू बिकम. आगे जाके बहुत इजी होगा, अभी परफेक्ट होंगे तो. क्या हो दोस्त, सब ठीक है? तो 1 पॉइंट उधर देख के लिख रहा है, 1 पॉइंट उधर देख के लिख रहा है, मतलब कुछ तो है. क्या नाम है आपका? पार्थ. ओ, PARTH. पार्थ. नाइस नाइस नेम. पार्थ का मतलब क्या है भाई? हाँ, पार्थ का मतलब शिष्य. ओह, नहीं पता मुझे. मेरा नाम का विनोद तो मुझे पता है. शिवा है, और क्या इतना आसान नाम लगा है. हाँ एग्जैक्टली, यू आर एज गुड एज माई सन कार्तिक. गणेश भी है क्या क्लास में? गणेश है क्या? अभी दोनों मेरे बाजू खड़ा हो जाएंगे अभी क्लास के बाद. सर चलो फोटो लेते हैं. पार्वती, अरे पार्वती कोई प्रॉब्लम नहीं है, ला सकता हूं मैं, बट अब तो गंगा भी बोलेगा फिर गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, कोई क्लास में पार्वती है क्या? नहीं ना. चलो, डन. कैन आई प्रोसीड? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट ऑल ऑफ अस? पक्का? चलो फ्रेंड्स, व्हाट इज सेक्शन 2.7 बेटा? Now there is something called 2.8 which talks about definition of assessment. What is 2.7? 2.9? 2.8? Wow. Sir, always definitions are in alphabetical order only. Always definitions are in alphabetical order. In any act you go through. In any act. Check करना है क्या? नहीं. 2.7. 2.8. 2.9. Assessment definition is, it is the procedure by which
assessing officer, that is the income tax officer, will assess the income of an assessee. Wow. Assessment is the procedure by which assessing officer assess the income of the assessee. अरे फिर दोबारा. Assessment is a procedure through which assessing officer will assess the income of an assessee. Clear है ना? No shortcuts. Chal, proceed. Nitya, put side heading section 2.8. बोलो बेटा, what is section 2.8? Right below. Assessment is the procedure. Assessment is the procedure by which income of an assessee is assessed. Is the procedure by which income of an assessee is assessed. Income of an assessee is assessed by the assessing officer. Income of an assessee is assessed by the assessing officer. सबको clear है ये बात? Friends, CA final, this topic is there. Assessment procedure. What way they'll do, how will they take action, what is search, what is seizure, what is survey. Too much of depth concepts are there in CA final. And I already told you day one that in CA final, DT is for 100 marks. IDT is also for 100 marks. 200 mark. No doubt about it. Sure. So what is 27? 28, 29, 225A, 231, 234, section 3, section 4, 112, general rate for long-term capital gain, 112A, long-term capital gain on sale of or units of business trust through recognized stock exchange on which STDs pay is taxed at the rate of 10% on amount exceeding. Wonderful. Same scenario, not long but short. 111. Tax at the rate of on amount exceeding. याद रख लो, ठीक है ना? Any other short term? Normal rates, slab rates. हो गया ना कहानी खत्म? दोस्तों बोलो, पक्का क्लियर है यहां तक? No doubt about it. Listen to one very interesting concept. Yeah? Listen. Let's start discussion about now one super duper interesting concept which is actually very crazy to catch hold of big fish in India who are making huge money. Government is telling boss आप इतना पैसे कमा रहे हो इंडिया में, मतलब आपको ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना है नेशन के लिए, देश. हाँ, अरे कीड़ा नहीं मेरे भाई, ऑप्शन नहीं है. सर क्लियर है ना एवरीबॉडी? That concept is called surcharge. And I'm focused only towards individuals. Tomorrow, we will learn the tax rates for partnership firms, LLPs, companies. AOP भी already हो गया. हाँ, normal. Sir, clear है? चलो, listen friends. Surcharge in case of what? Individual. Total income. Listen very clearly. Total income including dividend, comma 112, including dividend, comma 111A, 112, 112A is greater than 50 lakh. Greater than, but does not exceed 1 crore. Does not exceed kitna beta? Then you have to pay a surcharge at the rate of 10%. And surcharge is always a percentage on tax. Surcharge is on tax. HEC is on
टैक्स प्लस सरचार्ज। दोस्तों बताया मैंने आपको, बोलो मेरे भाई। Let's take an example. Let's say there is one person, Mr. K, Q. Okay, one person, Mr. कुछ तो नाम बोले यार, अच्छा interesting. Mr. Shri. Okay, let's say one person, Mr. Parth. अभी नाम बताया ना बेचारा. Mr. Parth, he has got PGBP income of 60 lakh. That's it. There is no other income. Somebody, no other income? Wow, tax is zero, base commission limit. Re. $60 lakh है भाई, बराबर है ना? How do we calculate tax? बोलो. Somebody is asking age क्या है पार्थ का? यार 2.5 lakhs. 2.5 lakh to 5 lakh at the rate of 5%, 12,000. 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20%. कितना बेटा? ये तो परफेक्ट हो गया आप लोग. More than 10 lakh at the rate of 30%, 15 lakhs. उसके लिए भी क्या कैलकुलेटर मेरे भाई? What is the total? 16 lakh 12,000. Apart from that, we will add surcharge at the rate of 10%. 1,61,250. 17 lakhs 73,000 plus H is at the rate of 4%. 184 47 HC का फिगर बोलना भाई. 70,950 टोटल बोलो. 18 lakhs 44,000. भाई साहब 60 लाख कमाए तो 20 लाख टैक्स में ही गया. समझे आप लोग? 60 lakhs here and 20 lakhs gone in the form of what? Tax only. And can you shift the burden? Can you shift the burden of income tax to somebody? This is not indirect tax. This is what tax? Direct tax. Impact is on same person. First day. Monday. Today is Friday. याद है ना? 4 दिन जब हम बच्चे थे तब सीखे थे ना. अभी डेवलप हो गए ना यार. 20 सेक्शन आते हैं अपने को, मजाक थोड़ी है यार. Come on. Impact and incidence is on same person. Indirect tax. Impact and incidence is on different person. There is a concept of shifting of burden only in case of indirect tax. Direct taxes are progressive in nature. Indirect taxes are regressive in nature. बात करें ना हम लोग ये सब. 60 lakhs earned, 20 lakh gone in the form of tax only. There is no other option. Surcharge का मीनिंग समझ गए क्या? Now Parth is telling, ये क्या है? ये 161 250 में क्यों पे करूं एक्स्ट्रा? गवर्नमेंट बोल रहा है भाई तू बड़ा आदमी है, तो बड़ा काम कर. तू इतना कमा रहा मतलब इनडायरेक्टली इंडिया की वजह से तू इतना कमा रहा है, तो देश के लिए कुछ तो दे. मेरा भारत अपना टैक्स, हाँ वो है. समझ गया क्या? क्लियर बात? वंडरफुल. एनी डाउट ऑन सरचार्ज? पिक्चर अभी. So what is the first point we wrote? Total income including dividend 111A, 112 and 112A is more than but does not exceed such as the rate of. सब बराबर क्लियर है इधर तक? बेटा बोलो. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, टोटल इनकम इंक्लूडिंग इक्वल 50 लाख सरचार्ज नहीं है. ग्रेटर देन लिखने का मतलब क्या है भाई? इंक्लूडिंग डिविडेंड 111A, 112A is greater than but does not exceed 2 crores.
कोई तो बोले 1 करोड़ सीधा 10 करोड़ ना, वो कल करेक्ट है कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल के लिए कहानी अलग है. In this case, surcharge at the rate of 15%. Some are telling, अच्छा मतलब ये बढ़ते जाएगा. हाँ, some are telling, अब भी समझ में आया सर प्रोग्रेसिव नेचर क्या होता. अब मालूम पड़ रहा है, पैसे कमाए तो इनकम टैक्स बोल रहा है तेरी तो लग गई. Sorry, clear with the concept, everybody? Story is not yet over. Listen. Next color. Third point. Total income excluding dividend 111A, 112, 112A. Excluding. Some are telling, अच्छा इसलिए आप अलग से लिख रहे थे क्या तब से? हम यही सोच रहे थे कि टाइम पास क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ. टाइम पास नहीं कर रहे बेटा, टाइम पास करने के लिए टाइम ही नहीं है. क्लियर है ना. एक्सक्लूडिंग डिविडेंड 111A, 112, 112A is greater than 2 crores but does not exceed 5 crores. Then surcharge on other income ठीक है ना. Surcharge on other income at the rate of 25%. I repeat again, surcharge on other income at what rate, my dear friends? 25%. But on dividend, 111A, 112, 112A, surcharge at the rate of 15%. Some are telling, पहले ही परेशानी है लाइफ में बहुत. भाई अगर सब चीज सिंपल है तो फिर अपने काम क्या है. सुबह बताया मैंने आपको, जितना कॉम्प्लिकेटेड ये रहेगा उतना अच्छा अपने लिए. We are respected for that only. You have to understand one point very clearly, that as a chartered accountants we are getting so much of respect because of knowledge what we carry. Why that is not coming to a BTech guy or software guy or a BCom guy? That's coming to us only because of the tremendous knowledge what we are carrying. Knowledge is power, man. That's the biggest wealth what we are getting. उसका कोई substitute नहीं है. बराबर है ना? Exactly. दोस्त डाउट है क्या अभी? ठीक है, एक 5 मिनट देते हैं फिर बात करेंगे. मैं एग्जाम्पल्स दूंगा फिर डाउट पूछ लेना. ठीक है, हो गया. चलो आ गया लास्ट केस. इसको तो जीने नहीं देंगे इसको तो. Case number 4. Total income excluding dividend 111A, 112, 112A is greater than surcharge on other income. क्या बेटा 50%, 100% ले लो. At the rate of 37%. Some of them, अच्छा 30% ऐसा गया, 37 ऐसा गया, 67 जाएगा. अरे मेंटल फेलो, सरचार्ज इज ऑन टैक्स. टोटल मत निकालो ऐसा प्लीज कभी भी. ठीक है ना. हो गया, आज पहली बार नहीं पढ़ा सरचार्ज में, कल ही बताया सरचार्ज आपको. वो क्वेश्चन वापस नहीं आना चाहिए. बराबर है ना दोस्तों. बोलना भाई 37%. बट on dividend, 111A, 112, 112A, surcharge at the rate of 15%. 25, 15 here. Indirectly, what government is trying to say is that indirectly, what government is trying to say is that in case of dividend income and in case of capital gain covered under 112, 112A, 111A, we will not charge the surcharge more than 15%. समझ में आ रहा क्या? In case of dividend income, in case of 112, 112A, 111A, we will not charge more than 15%. लॉजिक समझा क्या? बोलो मेरे भाई.
Everybody, sir. Now you tell me in these cases what rate of surcharge will come. In these cases, what rate of surcharge will come? Let's discuss some examples. ठीक है ना बेटा? Example number 1. One person, Mr. A, he has got salary income only. Salary income only 40 lakh. बोलो बेटा surcharge कितना आएगा? क्या रेट आएगा? बोलो nil. बराबर है ना? यार बोलना बेटा. One person, Mr. B, he has got salary only, but it is 90 lakh. What rate? Exactly. समझ में आ रहा क्या? बोलो बेटा. One person, Mr. C. One person, Mr. C, he has got PGBP income of 1.8 crore. When I say income, that means profit, not your turnover. Turnover अलग है, income अलग है, बराबर है ना? इतना तो कैरी करते ना हम लोग. हाँ बोलो, surcharge at what rate? बोलो बेटा. उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है ना? समझ में आ रहा ना बेटा? चलो, 4th क्वेश्चन. मिस्टर डी, इसका कहानी ये है बेटा, सुन लो ध्यान से. पीजीबीपी 3 करोड़. कितना पीजीबीपी? एंड एलटीसीजी एसटीटी पेड वाला है जो है 1 करोड़. समझ में आया क्या? आई एम नॉट आस्किंग टू कैलकुलेट टैक्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सरचार्ज. क्या लगेगा बेटा सरचार्ज? ऑन दिस surcharge will be wonderful. On this, surcharge will be 10%. Because you understand that total income other than dividend, capital gains is more than 2 crores, but does not exceed 5 crores. Beta barabar hai na? Speak out. Everybody clear with this concept or not? 100% making sense for everybody. चलो अब बोलो, पूछो दोस्तों, डाउट क्या है? हो गया डाउट? पता है? हाँ, मेरा कितने सच है? हाँ हाँ, आप शाम में विनोद सर से पूछो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. हम क्या है यार, छोटे लोग, बेस कैपिटल लिमिट वाले हैं. फर्स्ट डे आपको बताया था, याद है ना, कि किसी बंदे से पूछो आप सरचार्ज कितना भरते हो, उससे मालूम पड़ेगा कितना कमा रहे. बराबर है ना? विनोद सर से पूछना पड़ेगा, सर 37 है या 25 है? 37. Highest rate. Good question. That highest rate is technically called as, that highest rate in income tax is technically given by section 229C, which is called as maximum marginal rate. That is the highest rate of income tax. Highest rate of, which is 30% हाईएस्ट है नॉर्मल वाला. आप वो अनएक्सप्लेन वाला लेके मत आओ, वो तो अलग की कहानी है, वो तो नमूना आदमी है. नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं. प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 37%, प्लस एट द रेट ऑफ 4%. कितना आता है? 42.74%. इंडिया में है ऐसे लोग, बहुत लोग, जो 42.74% टैक्स पे करते. मतलब 100 रुपए कमाए तो 42 रुपीज टैक्स में ही गया. क्या सर? नहीं, कंपनी की बात ही नहीं कर रहे हैं, कंपनी कल बात करते, अभी नहीं. अगर मैं अभी बोलूंगा तो फिर खत्म. अरे क्या हुआ यार, इतना साइलेंस क्यों हो गया अचानक? आप लोग कुछ पूछना है क्या? बोलो ना भाई, क्या है डाउट? क्या है? और सरचार्ज इसका अलग, इसका अलग, पूरा टोटल ले लो, लास्ट में आएगा अपना दोस्त HEC. अरे ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा. 37% ऑन 30%, 4% ऑन टोटल. अरे आया ही नहीं आया भाई, ये अभी वही सोच रहे बैठे. 30 + 37 + 4 is 61 नो, सॉरी 71 नो. सर समझ गए ना? इफेक्टिव रेट मेरे भाई, इफेक्टिव रेट.
दोनों में फर्क है ना. Citizen is different, resident is different. Resident is somebody who satisfies the basic conditions. Monday morning we learn here. Where I teach on Monday morning, one point already I told you, who is staying in India for 1 night to 2 days or more. Correct, no? For example, आपके पास आधार कार्ड है, you have got some passport, you went to foreign, last year you didn't come to India at all. That means as per income tax, you are non-resident, but you are still a citizen of India. So citizenship is different, residential status is different. Monday के दिन देखेंगे. वो अपन मंडे को बात करते हैं, उसका बहुत कहानी है, बहुत डेप्थ है उसमें. इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम. आई विल स्पेंड 1-2 hours ऑन द क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड. 2 घंटे पढ़ाऊंगा आप जो क्वेश्चन पूछे, तो उसको 2 मिनट में नहीं होगा. मंडे को खत्म करते हैं, 2 दिन रुक जा. नेक्स्ट क्या, अरे थोड़े लोग तो सर समझ में आया क्या? ये सरचार्ज का कहानी क्लियर है क्या? पक्का दोस्तों बोलना भाई. अच्छा, एक सुपर कॉन्सेप्ट बोलूंगा अभी, लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे. लिसन वेरी क्लियरली, इट टेक्स 2 minutes, डोंट वरी. लिसन, somebody is telling, सर आप हर चीज सुपर बोल रहे क्या सर? है ही इनकम टैक्स सुपर. हम भी सुपर है, वो तो है सब बराबर है ना यार. इनकम टैक्स इतना सुपर है तो फिर ऑब्वियसली सुपर बनेगा ही बनेगा यार. चलो नेक्स्ट. लिसन 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 लिसन, let's take 2 names, okay? There is one person, Mr. Karthik. अरे तो ये नाम तो पता है मेरे को, दूसरा नया नाम बोलो यार क्लास में. रवि का नाम पता है. तो सबका नाम क्या है? सर्वेश. ओ ये हर जगह पे रहता है. आपका नाम क्या है दोस्त? भरत. VARAD. Correct? Wonderful. Bharat, let's take the situation like this. Okay, listen. Bharat's income is 50 lakh exactly. बोल रहे हैं कितना खुश हो रहे हो. चलो भाई, टैक्स कैसे निकालते इसका? बोलो टैक्स कितना है इसका? up to 2.5 lakh nil, 2.5 to 5 lakh 12,500, 5 to 10 1 lakh, 40 लाख पे 30% 12 लाख, 13,12,500. बराबर है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर. चलो सरचार्ज वो सब छोड़ दो. कितना है टैक्स? 13 लाख. सरचार्ज कितना है बेटा? 10%. वाव, नॉनसेंस, नील. ये क्या निकल रहा है कैलकुलेटर में? सरचार्ज निकल रहा है क्या? HEC. अरे मैं पूछा नहीं ना HEC, रुकना ही, मैं नहीं पूछूंगा अभी. HEC I'll not ask. चलो दूसरा बंदा का नाम क्या नाम है? सर्वेश. कौन है सर्वेश? हाँ सर्वेश. सर्वेश का इनकम है 51 लाख. भाई साहब एकदम खुश है. 51 lakhs मैन. आई एम अबव द लिमिट ऑफ सरचार्ज. इसका टैक्स कितना है बोलो बेटा? 31 लाख पे 30% हो गया. 13,42,500. परफेक्ट. 13,42,500 बराबर है ना? और सर्वेश तो बड़ा आदमी है, 51 लाख है, वो एकदम खुश है उल्टा. सर कितना परसेंट है बेटा? कितना है? 1,34,250 बराबर है ना? 14 lakhs. सर्वेश भाई आपने वरद से कितना ज्यादा कमाए भाई? 1 लाख. टैक्स कितना ज्यादा भर रहे मेरे भाई? एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताओ मेरे भाई. What is the extra income Sarvesh has got? 1 lakh. What is the extra tax Sarvesh is paying? 1,64,000. बराबर है ना भाई? अरे yes or no sir? HEC बाद में देखते हैं भाई. HEC तो लास्ट स्टोरी है, वो तो इधर भी आएगा इधर भी आएगा, वो तो बाद में देखते हैं. फॉर अर्निंग एक्स्ट्रा 1 lakh ही इज पेइंग अ टैक्स ऑफ 164,250. रो रहा है बेचारा. 5 रुपए इतना कुछ था, मैं 51 लाख सरचार्ज. जब टैक्स कैलकुलेट हो गया, अरे मेरे भाई ये क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ी हो गया मेरे साथ. 1 लाख ज्यादा कमाया तो 164 टैक्स. मैडम जी, कौन है मैडम जी? हाँ मैडम जी, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है. लिटरली मेरे साथ तो बलात्कार ही हो गया.
1 लाख ज्यादा कमाने से आप 164 टैक्स कैसा पूछ सकते हैं आप? समझ में आ गया क्या? बोलना भाई। मैडम जी टोल्ड, सरेश भाई तू क्यों रो रहा है बता मुझे? टैक्स ज्यादा आ रहा है ना? कितना ज्यादा जा रहा है? 164। कितना ज्यादा कमाया? 1 लाख। तू रो क्यों रहा है? क्योंकि आया जेब में लाख रुपए, तू भर रहा 164, उसके लिए रो रहा ना तू? तू एक काम कर, तू 50 लाख के ऊपर कितना एक्स्ट्रा कमाया पूरा मुझे दे दे. And that concept is called marginal relief. That concept is called marginal relief. When extra tax is more than extra income. If you observe here, what is the difference in income, my dear friends? 1 lakh. What is the difference in tax, my dear friends? 1,64,250. Marginal relief is 64,250. बराबर है ना? जितना 1 लाख एक्स्ट्रा कमा उतना ले रहे, मतलब 64,250 मार्जिनल रिलीफ हो गया ना बेटा? This becomes 14,12,500. कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है मुझे, बिकॉज 13,12,500 प्लस 1 लाख पूरा ले रहे ना भाई? अरे बोलना सर, मार्जिनल रिलीफ कौन सा समझा क्या? सबको दिमाग में जा रहा है क्या? When extra tax is more than extra income. ये रो रहा था ना तब से, अरे 1 लाख कमाए 164 ले रहे यार, मेरे साथ टू मच हो गया, ये मुझे भरना ही नहीं है, ये पागलपन नहीं है. मैडम जी बोले भाई तू रो मत, तू एक काम कर, 64,250 तू रिलीफ ले ले, 1 लाख जितना तू कमाए तू पूरा मेरे को दे दे. अब तू फिर रो रहा है, जितना 1 लाख में कमाए पूरा तुम ले रहे, मतलब ये भी गलत हो गया ना? क्या फायदा मिला मुझे? भाई हम तेरे को फायदा नहीं दे रहे, दिस इज नॉट ए बेनिफिट. अब तुमको इतना ही फायदा मिला है कि तुमको नुकसान नहीं हो रहा है. बराबर है ना? तू तो इसके हो रहा था कि तू जेब से ज्यादा पे कर रहा ना, ज्यादा थोड़ी ले लिए तुमसे अभी. फिर ये बोल रहा है फालतू में 1 लाख रुपए कमाए में, मत कमा भाई. समझ में आ रहा है क्या? सबको क्लियर है क्या? 2 minutes, 2 minutes. I'll listen to your doubt. Give me 2 minutes. दो नाम बोलो और. MEET. इतना ही आपका नाम? ओह, they 1% meet. नहीं चाहिए भाई. They 1% meet. They 1 more person गीत. हाँ? जीत. अरे 1% meet, 1% गीत. Okay, no fun. Listen carefully. We'll complete it. Yeah? गीत meet income is 50 lakh. इसका टैक्स कितना होगा बेटा? 13,12,500. निकाले ना हम लोग ऑलरेडी यार. सच्चा कितना है? टोटल हो गया 13,12,000. गीत का इनकम है 55 लाख बेटा. कितना है गीत का इनकम? चलो बताओ गीत मैडम जी का टैक्स कितना आएगा? बोलो भाई गीत का टैक्स कितना है? 1462. सरचार्ज ऐड करेंगे ना बेटा? कितना परसेंट है बेटा? 10%. 1,46,250 बराबर है 16 lakh. I'll tell you an important point now. What is the difference in income? What is the difference in tax? 2,96,250. Answer is no. Marginal relief. Because the concept of marginal relief will apply only when extra tax is more than extra income. That will generally happen only when income is little bit above surcharge. And you cannot ask me cut off. If you ask me cut off, 50 lakhs का cut off अलग है, 1 crore का cut off अलग है, 10 crores का cut off अलग है. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Speak out my dear friends. Wonderful. अब पूछे आपका डाउट क्या है? एग्जांपल में 50 लाख तो 51 लाख है, तो जो 51 लाख है उसमें से जो मार्जिनल रिलीफ है माइनस किया ना? टैक्स निकालने से पहले 1 लाख दे देने का है, क्योंकि अगर अपन ने टैक्स निकाला तो पहले ही उससे ज्यादा आ रहा है ना 50 लाख. नहीं, पर प्रोसीजर यही है. You have to calculate on 51. टैक्स पे करना है ना 50 लाख से. बट 64,250 रिलीफ आ गया ना तुमको. अगर डिफरेंस कंपेयर कर रहे हैं, आप 50 लाख वाले के साथ कंपेयर करोगे तो आपका टैक्स एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 164,250 आ रहा है ना? अरे 50 लाख माइनस 13,12,500, 51 माइनस 14,12,500 सेम ही आएगा ना?
कम क्यों आएगा? HEC बाद में ऐड करने का. HEC concept, okay, I'll tell now proper way. HEC concept is no way linked to marginal relief. HEC should come only after marginal relief concept is over. Marginal relief concept is linked only with surcharge. समझा कभी? Everybody clear with this concept, all of us? Something very, very important. I hope and strongly believe that we got a great amount of clarity today on these concepts, guys. बताओ बेटा. Come on. Start taking this. Surcharge for individual, सिर्फ individual. बाकी लोग कल बात करते हैं. अरे लॉजिकल पर्सन मतलब से आप ये सोचो कि आप टैक्स के लिए थोड़ी ना इनकम कम कमाओगे. आगे तो क्या कर सकते हैं. बट 50 कमाओ या 51 कमाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, HEC के हिसाब से लॉस होगा. HEC के हिसाब से लॉस होगा ऑब्वियसली. वो तो सही है. प्योर मैथमेटिकल गेम. Once we are done with first chapter, next week we will write a small exam on the first chapter. I'll tell you when. 2 days before only I'll tell. And after second chapter is over, we'll write one exam for first and second chapter together. After third is over, we'll write for 1, 2, 3 together. That is called cumulative learning. Then only it makes sense, boss. Starting में एकदम आराम करके बाद में टेंशन लेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ फायदा नहीं है उसका. And whenever I keep conducting exams, I'll only correct and check the papers. I'll give you feedback also. And whoever is toppers, you'll also get your gift. And last batch, I also conducted a grand exam. To few toppers, we gave some mementos. This time we'll do something different. iPhone. Wow. तो 90 प्लस लेके आ टैक्स में. I'll give you. Somebody is telling, कैसा आएगा सर? कैसे आएगा? कैसे क्यों आएगा? My highest track record in tax is 96. One Hyderabad student of mine got 96. One more student got 94. 90 के ऊपर 2 स्टूडेंट्स को आए मेरे. एक बंदे को 94 आया, एक बंदे को 96 आया. हाँ, आईफोन नहीं दिया उसको, पेन दिया था. बट वो पेन अच्छा वाला पेन दिया था यार. वैसे कुछ टाइम पास वाला नहीं था. तब आईफोन का उतना शौक नहीं था. मतलब 4 साल पुरानी बातें. तो उसको एक पेन दिया था, बहुत अच्छा पेन दिया था. मॉन्ट ब्लैंक, पता है ना? हाँ, तो वन बिग ब्रांड फॉर पेन्स. उसको कुछ पेन चाहिए, मतलब वो बड़ा बिग फर्म में उसको जॉब आया था, तो आई गेव ए पेन टू हिम. $90 प्लस. ठीक है, डन. नहीं, 2 मिनट दोस्तों, हो गया? कैन आई स्क्रॉल इट?
हो गया ना? बस ये एग्जाम लिख के चले जाओ. मार्जिनल लिफ मैं आपको कल लिखाऊंगा क्लास में, ठीक है? थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं उसको, मार्जिनल लिफ को कल लिखते हैं एग्जाम क्लास में, ठीक है दोस्तों? Take the examples and you can proceed. Thank you so much. Have a great day. Have a good time. Have fun. Enjoy learning CA Inter. And tomorrow we'll most likely complete first chapter. Most likely. कुछ थोड़ा बहुत बच गया तो मंडे को फिनिश कर लेते. And this Sunday class will be holiday. And not that every Sunday class will be holiday. Some Sundays I will definitely take class. But this Sunday being the first Sunday, I will not take class. But next Sunday, 99.99% I'll take class. Some Sundays I'll take, some Sundays I won't take. So संडे टाइमिंग सुबह रहेगा, थोड़ा आधे एक घंटा ऊपर नीचे कर लेते हैं. डिपेंड्स अपॉन नेक्स्ट क्लास देयर और नॉट देयर. अगर नेक्स्ट क्लास नहीं है तो उस हिसाब से डिसाइड करते हैं. मतलब आपका दूसरा क्लास नहीं है तो थोड़ा अपन चिल में आएंगे, चिल में आएंगे और फुल हॉट में पढ़ेंगे. हाँ, फोड़ देंगे सब्जेक्ट को, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है, तो ये संडे तो क्लास नहीं है बेटा. कल मोस्टली चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर मंडे स्टार्टिंग में क्लोज कर लेते हैं. And yesterday, some students have turned up to me with regard to somebody joining recently. Vinod also told me yesterday night. So if somebody of your friends are coming and joining now after first chapter, tell them to meet me personally so that next week I can help them out in the evening time, post 7 p.m. and I'll bring them on track for the first chapter. बाकी मैं देख लूँगा, मेरी जिम्मेदारी है. अगर 2 चैप्टर के बाद आने हैं, डेंजर है वो. तब तक ट्रेन और बस would have already been missed. So if any of your friends are interested to join now, they can now. एक हफ्ते बाद तो नहीं होगा बिल्कुल. बस इतना ही है. मार्जिनल लिफ विल राइट टुमारो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. जिसको क्लास है, दूसरा क्लास, दे कैन प्रोसीड. अदर्स कैन कंफर्टेबली राइट. मिलते हैं कल सुबह. And please carry your material modules from tomorrow. We are going to solve tomorrow some questions from our class material. कल से लेके आना. I know आप रोज लेके आ रहे, बट कल से तो पक्का लेके आओ. मतलब आज तक लेके आए, कल घर पे रख के आए तो मतलब नहीं ना, इसलिए पता है मैंने आपको. रोज लेके आना. थैंक यू सो मच बेटा. बाय बाय. थैंक यू. मजा आ गया क्लास आज.